आपको बताऊं सर, 75 साल में गोड्डा के लोगों ने रेल नहीं देखा। आजादी के 75 साल बाद आज वहां रेल है, उस रेल को देखने के लिए 5 लाख की भीड़ आई थी। आज ये सिचुएशन है सर। ये लोग स्वास्थ्य की बात करते हैं सर, पोजीशन की बात करते हैं कि हमने बहुत विकास कर दिया। मैं एक ऐसा बदनसीब आदमी हूं सर कि जिसकी अपनी छोटी बहन इलाज के बिना मर गई। 93 में मेरे यहां कोई डॉक्टर नहीं था जो पेट दर्द का भी इलाज कर पाए। 93 में मैंने अपनी छोटी बहन को खोया है सर। आज उसके भाई होने के नाते मुझे गर्व है कि मेरे लोकसभा में एम्स जैसा इंस्टीट्यूट प्रधानमंत्री, देवघर है सर, 12 ज्योतिर्लिंग का देवघर है, वहां लोग पूजा नहीं कर पाते थे। आज बेंगलोर से, आज बंबई से, आज अमेरिका से, लंदन से सभी लोग वहां एयरपोर्ट पर चढ़कर आते हैं। यह विकास है। आज मेरे लोकसभा में 2 मेडिकल कॉलेज, 3 इंजीनियरिंग कॉलेज, 4 पॉलिटेक्निक कॉलेज, 16 ITI, 2 एग्रीकल्चर कॉलेज, 1 डेयरी कॉलेज, 4 केंद्रीय विद्यालय, ये सारी चीजें माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है सर। इनका विरोध यह है कि गरीब के घर में जो चूल्हा जल रहा है, जो घर घर में पानी जा रहा है, जो नल जल की पहल चल रही है, जो गंगा से पानी देवघर आने की बात चल रही है, उसका यह विरोध है सर। इनका विरोध यह है कि बाइडेन ऑटोग्राफ क्यों लेता है। इनका विरोध यह है कि पापुआ न्यू गिनी का जो है प्रधानमंत्री उनका पांव क्यों छूता है। इनका विरोध यह है कि ऑस्ट्रेलिया का जो प्रधानमंत्री है वो उनको बॉस क्यों कहता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने चाहे पिछड़े इलाके हो, चाहे देश हो, चाहे दुनिया हो, जितना काम किया है उसके कारण इनको लगता है कि 2024 में नहीं आने वाले। मैं अध्यक्ष जी अपनी बात महाभारत से खत्म करना चाहता हूं। महाभारत का एक बड़ा कहानी है सर कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और पूरे, चाहे कौरव पक्ष के लोग हों चाहे पांडव पक्ष के लोग हों, वो सभी जो है चीरहरण को देख रहे थे। अध्यक्ष महोदय, आज माननीय प्रधानमंत्री जी, ये लोग नहीं समझेंगे सर, ये लोग इसीलिए नहीं समझेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जब परिवारवाद की बात करते हैं ना तो इनको लगता है कि परिवार की बात करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी परिवार की बात नहीं करते हैं। वकील का बेटा वकील हो जाए क्या दिक्कत है। IAS का बेटा IAS होता है सर। यहाँ DG हैं RPF के, वो IPS भी हैं, उनके दोनों बेटे IAS बने सर, जो अपनी योग्यता क्षमता के साथ आते हैं। परिवार को वो क्या कहते हैं, आज मेरे यहाँ का नेतृत्व क्या है। माननीय प्रधानमंत्री जी गरीब परिवार से हैं। माननीय नड्डा जी ये हैं जिनके परिवार में कोई पॉलिटिक्स भी नहीं था। माननीय राजनाथ जी बैठे हुए हैं, एक कॉलेज में जो है पढ़ाते थे सर, और आज समझिए कि इनको भगवान ने जो है पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया, डिफेंस मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है सर, जिनके आगे पीछे जो है कोई पॉलिटिक्स में नहीं है। हमारे जैसे लोग हैं। क्या है कि यहाँ जितना परिवार है ना वो इनके पीछे हैं जो कि परिवार का आदमी नहीं है। और वहां समस्या ये है कि वो सभी परिवारवाद जो है वो उनका जो नेता है, इसीलिए उनका परिवार और परिवारवाद में फर्क है, उनको नहीं समझ में आएगा। तो मैं आपको ये कह रहा हूं सर कि आज जो ये अविश्वास प्रस्ताव है सर, अविश्वास प्रस्ताव एक गरीब के बेटे के खिलाफ। आज जो ये अविश्वास प्रस्ताव है उस आदमी के खिलाफ है जिसने कि लोगों को मकान बना के दिया। आज अविश्वास प्रस्ताव उस आदमी के पीछे है जिसने कि लोगों को पीने का पानी दिया। आज अविश्वास प्रस्ताव उस व्यक्ति के खिलाफ है जिसने शौचालय दिया। आज अविश्वास प्रस्ताव उस आदमी के खिलाफ है जिसने सबों के घर में उजाला लाने की कोशिश की। गरीब के खिलाफ है। और जितने बहस होंगे सर वो माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों का चीरहरण करेंगे, जैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ है। मैं आपको कहना चाहता हूं इतिहास से कि चाहे राम मंदिर बना दिया हो, 370 जो हमारी थी धारा, वो सारे तो हमने बना ही दिया। मैं केवल इतना कहता हूं सर कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, जयद्रथ, चाहे वो युधिष्ठिर हो चाहे वो अर्जुन हो, सभी मौन धारण किए हुए थे। आज यदि माननीय प्रधानमंत्री जी का गांव गरीब किसान के हितैषी का आप चीरहरण करेंगे तो जिस तरह से न धृतराष्ट्र बचा, न दुर्योधन बचा, न भीष्म पितामह बचे, न अर्जुन बचा, न युधिष्ठिर बचा, आप में से कोई भी बचिएगा 2024 में आप लोग कोई वापस नहीं आइएगा। हम 400 सीट के साथ वापस आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। सर रूल
TR बालूजी, sorry, TR बालूजी। अरे बालूजी को बोलने दो, TR बालूजी, मैंने अलाउ नहीं किया बालूजी, आपने अलाउ किया। सर निशिकांत दुबे ने मेरा नाम लिया, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता के काफिला कैसे लुटा। भारत माता इतना पेटेंट नहीं है, भारत माता 140 करोड़ लोगों की भारत माता है। ये गलत नैरेटिव चलाते हैं, ये नारी विरोधी है, इन्होंने नारी का अपमान किया। निशिकांत दुबे ने अभी नारी का अपमान किया। ये वो व्यक्ति है जो TR बालूजी, ये वो व्यक्ति है जो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में आदिवासी लोगों से पैर धुलवा करके पानी पिलाते हैं। ये वो व्यक्ति है जिसने आदिवासियों से अपने पैर धुलवाए और उसको पानी पिलवाया। सर ये वो व्यक्ति है जो आपका रिकॉर्ड भी नहीं जा रहा। ये वो व्यक्ति है जो आदिवासियों से पैर धुलवा करके पानी पिलाता है। सर मणिपुर पर चर्चा नहीं की और ये जो है नफरत TR बालूजी, यहाँ पर भी नफरत फैलाने का काम किया है इस व्यक्ति ने। Honorable Speaker, sir. Honorable Speaker, sir. I support the no confidence motion on behalf of DMK. First of all, I start with Mr. Rishikant Dubey, who has ended his speech with reciting Mahabharata. I am also reminded of a particular episode wherein Krishna has advises Arjun to throw their aims his bow towards his grandfather, kith and kin, friends, and everybody. That was a story in the epics. But what is the end result of the Mahabharata? Finally, they lost it, and King Arjun, Dharma, and other people won the case. He has recited about Draupadi and other people. So what has happened? Finally, that is the end result. That is most important as far as that epic is concerned. I am also not willing to oppose my old friends. They are all very close friends, especially my friend, the leader of the house, Mr. Narendra Modi, and other friends also. They are the first friend everywhere. They are my friends prevailing over the ruling party. I am rather hesitating to oppose them because of the only reason it was led by the late lamented leader Vajpayee ji. That was the only reason. And at the same time, now I am opposing. Now I am supporting the no confidence motion means because we want to kill the evils. Krishna advised Arjun, you are not going to kill your kith and kin and friends. You are going to kill the evils only. The same thing I am doing, sir. There is no other way for me, sir. Sir, moving the motion, no confidence motion against the brutally majority government. It is not fair on our part. It is not all fair. And moreover, it is at the fag end of the parliament, sir. This parliament. It is not fair on the part of the opposition to bring the no confidence motion, sir. But there is no other reason because Prime Minister is not coming. Prime Minister has been elected member of Parliament and nation's Prime Minister to attend the government Parliament only. He has not come so far. That is why there is no other way to bring the Prime Minister to this house. That is why a no confidence motion has been filed by the India opposition. Sir, to start with Tamil Nadu, he is making the stepmotherly attitude towards the Tamil Nadu, sir.
What he has done? Just before the 2019 election, James was a foundation laid by that same Prime Minister. Even after 5 years, they have not done even single brick over the first brick. They have not done it. Sir, he has promised 2 crore job every year. By this time, 18 crore job would have been created. Nothing, he has not done. Sir, he has promised 15 lakhs per head. But he has not given even single rupee. Sir, he has promised jobs, lakhs and lakhs of jobs to our young men. Even he has abolished 5 crore job in the Manrega. And moreover, over 46 years, the unemployment is still prevailing. He has not done it. He has failed to do that, sir. Sir, wherever he goes around the world, he talks about Tirukural, he talks about Tiruvallur and so on, sir. But he is not making the rightful thing to Tamil Nadu, sir. Shame. Sir, 2,000 crores out of 50 lakhs, 2,000 crores out of 50 lakhs budget, can they provide to Tamil Nadu for the construction of AIIMS, sir? Just now, the other friend has said, there are lots of AIIMS have come throughout the nation, but nothing has happened in Tamil Nadu. Shame. Is it fair on the part of the Prime Minister? That is why we wanted to get out of him, sir. Sir, and they say the money has to, for the AIIMS, this AIIMS alone. For the Tamil Nadu AIIMS, the money has to come from Japan. Is it not shameful, sir, on the part of the Prime Minister? Sir, out of 41% of the allegation, we are getting only 20% against our exchequer income, exchequer payment from Tamil Nadu, sir. Sir, some years back, the late lamented leader Rahul Gandhiji and Jayawardene had made an agreement. Rajiv Gandhiji and Jayawardene made an agreement. In the 13th amendment of Sri Lanka should be taken care. And unless otherwise 13th amendment is made up, there won't be peace in northeast of the north and east of Sri Lanka. That is what both the leaders have agreed and signed in the agreement. That agreement has not yet been placed, not yet been retrieved from the cupboards of the Sri Lankan government. They have not done it. But every now and then, government of India is helping the Sri Lankan government often and often, sir. They have miserably failed to retrieve back the Kachetiu, which was owned by Ramanathapuram, king of Ramanathapuram, anciently, sir. They have not done it, sir. Women reservation, they are simply keeping quiet, and the women folk of India is cursing him. But for that purpose, he has to go. Sir, what happened to Sethi Samutram? Yes. Sethi Samutram is just, they kept in the cupboard. Only reason is, Madam Sonia Gandhiji and Dr. Kalaya Karnaniji came to the function in the forefront. They said in the forefront, that's all. It was laid, the foundation stone was laid by Dr. Manmohan Singh, overwhelmed by the whole of the world. Just on the laying of the foundation stone, the whole world appreciated 160 years old project, sir. That has not, in the middle of the project, they have stopped it because Sangh Parwar has stopped it by a court order. So, who has created the route? The route was created by Vajpayee only. Line, alignment, everything was laid by Vajpayee only. It is his own child. But it has been brought up by Dr. Manmohan Singh and Sonia Gandhiji and Dr. Kalaya Karnaniji. Because they have brought up, only 30 kilometers is pending, sir. Otherwise, it would have been completed by 3 or 4 months. So shameful on the part of this government. This government should go immediately because all the Tamils
in spite of his recital of Tirukural, all the Tamil the stanzas, people won't forget him. Let him. He will face the sequence. Yes, yes, yes. Sir, the government has promised MSP. Only 700 people have been killed in Delhi. MSP has not come to the reality so far, sir. 15 lakhs, 2 crores, all are as history. And prices, the petrol and diesel. So what is the international price on crude oil? $88. $80, $85. What is the price of petrol and 100 rupees and 103 rupees? So this is not fair. But what has happened in those period, during UPA period, it was 60, 65, just like the only. At that time, the diesel price, what is that? Crude oil price was only 80 rupees. Now, $80. What is happening now, sir? Sir, 155 lakhs government loan is there. Now, what was the UPS for only 55 lakhs, sir? This is what, that is why we are opposing this government. Forthwith, we have to get out of this government, sir. Governance, sir. Coming back to treatment meted out by minorities. Minorities of Manipur have been killed ruthlessly, sir. Shame. Sir, what has happened? Shame. 143 people have been killed. 10,000 people have, 65,000 people have Dismiss. they have fled out of the particular state. And two women folk have been striped, gang raped, and paraded the nude in the streets of Manipur, sir. Sir, it is worthwhile to say now, under 1,044 incidents took place. Women and children brutally killed. Where? It is not in Manipur, sir. It is in Ahmedabad, sir. The daylight they have been killed. When Honorable, our Prime Minister, the former Chief Minister of Gujarat was ruling the government. Shame. 2,500 people were missing. Majority are belonging to minority community. Shame. The whole civilized world was up in anger and condemned the Gujarat's drama in strong terms. Many fact-finding, impartial investigation revealed that merciless power politics, editorial and prescribed and targeted crimes, and CM of the day was accused of condemning violation. Not condemning the violence. But your own party, Prime Minister Vajpayee, condemned the bloodbath and said, don't cross sacred line of Raj Dharma. So I quote the PT story, sir. PT story on 4/4/2002. Speaking to reporters at the end of the day, visit of Gujarat, he told the Chief Minister of the day, Mr. Vajpayee, Modi ji, Chief Minister, to follow Raj Dharma and make no distinction between the people on the basis of caste, creed, and community. And further, he says, majority needs no protection. Majority is capable of safeguarding its interests. They have the number on their own. It is only the minority which needs protection, sir. This is what the same thing is happening here, sir. Nowadays, what has happened to Gujarat? Majority versus minority. The same thing is happening in Manipur. Majority versus minority. It has been inflicted upon the minorities by the majorities. The Chief Minister is helpless. He is looking to lukewarm. And the Prime Minister is not coming to the Parliament, and also he has not gone there. Whereas the responsible India parties went to the Manipur, and they have just understood what has happened, and that is why they are speaking loudly, sir. Late leader Vajpayee stood for the Raj Dharma, and we are standing behind the person who is doing the Raj Dharma nowadays, sir. But today, we cannot stand behind them.
Because when women are gang raped, striped and nakedly paraded, 140 people were killed, 300 people were severely damaged, 65,000 people have already ran for shelter to the adjoining forest. And CM Manipur tell openly that 100 such incidents of naked parading had happened. Shame on the part of the Sir, now the whole world is condemned the happenings in Manipur in no uncertainties. European Union Parliament, they say discussion in European Parliament and British Parliament have condemned PM Modi's and his party very strongly. In the EU Parliament, six parliamentary group has appealed the European Parliament. They say in their plea, whereas violence in India's Manipur state has erupted along ethnic and religious lines between the mainly Hindu Meitei community and Christian Kuki community, leading to a cycle of violence with over 100 people killed, over 40,000 displaced, and the destruction of the property and places, and so on, sir. Whereas in the latest round of violence, human rights groups have accused the BJP-led government in Manipur and nationally of implementing divisive ethno-nationalistic policies which opposes in particular religious minorities. Modi visit to USA has castigated, US history has castigated 75 Democrats MPs for human rights violations in India. That is in US, sir. So lastly, I want to quote Narendra Datta, sir. Narendra Datta's speech. I quote, sir. Datta addressed the gathering as brothers and sisters. He has mentioned brothers and sisters, not ladies and gentlemen. The brothers and sisters has got more homely than ladies and gentlemen. He says I quote the speech, sectarianism, bigotry, and its horrible descendant, fanatism, have long possessed this beautiful earth. They have filled this earth with violence, drenched it often and often with human blood, destroyed civilization, and sent whole nation to despair. This is what the great man Narendra Datta said to the world. The man who introduced Hinduism to the world said these words, warning the world from disaster. He also quoted, I again quote, I am proud to belong to a religion which has taught me and world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and refugees of all religions and all nations of the earth. That is what he has told, sir. Finally, he says, now I say, it is Narendra Modi famed Hindutva, which the world witnessing today. This is nothing but Hinduism, where religious tolerance has no place. Your schemes of things has sent agendas like Citizenship Act amendment to drive away minorities and uniform civil code, etc. Sir. Finally I quote, Tirukural 474. அமைந்து ஆங்கு ஒழுகான் அளவறியான் தன்னை வியந்தான் விரைந்து கெடும். He who defies righteous order, oversteps limits, and enjoys self-aggrandizement gets lost fast. This is what I want to tell my close friend Narendra Modi ji. So the whole world has warned him against the peril he is going to meet, and also the Indian parliamentarians in this house. Moreover, he is very aggressive and atrocious also. During how come he is not attending the parliament, sir? Yes. How come? Yes. What right is, sir? Public has elected him to come to parliament, yes. And moreover, he is holding the position of prime minister. Yes. This is not fair on the part of him, sir.
near about 1 month, all the members of parliament belonging to the opposition, every day in, day out, they are just making a plea before them. And this ruling party is trying to support all these rules and regulations of the parliament and also the Constitution of India. Moreover, there is one person in our state. Finally, sir, there is one person in our state. Sir, Assembly is in session. Chief Minister and all the ruling party, the opposition, everybody in present. But before chanting national anthem, this man is going out, sir. Shame on the part of the governor who is ruling the state. It is not fair. So ESP brought back to the governor by the governor, and the home minister should take note of it. And governor should be condemned in all respects. Yes. Thank you, sir. Thank you very much. Professor Swagat Roy ji. Sir, on behalf of the All India Trinamool Congress and its leader Mamata Banerjee, I rise to speak on the no confidence motion. I also speak on behalf of the India Alliance. I express confidence in the Supreme Court, which restored Rahul Gandhi's membership. Also, I express no confidence motion against this government. I have to say that I have nothing personal against Mr. Modi. But as Brutus said in Julius Caesar, not that I love Modi less, but that I love India more. If anybody loves India, they will oppose Modi. Because his government has been a government of failed promises and disastrous policy decisions. Still, sir, I do not want to make it personal. I do not want to raise the question of Modi ji's educational qualification, over which there is a cloud. Nor do I want to speak on Gujarat riots or the BBC documentary on Modi ji or Gujarat riots. Sir, before going to my main point on Manipur, I want to mention that this government is destroying federalism in the country. Its purpose is to weaken all state governments. West Bengal is a victim because Amit Shah went to Bengal and said, "Agle bar 200 par." BJP could not even get 80 seats. So they have stopped all money for Narega, which amounts to 7,300 crores, and for PM Awas Yojana, which amounts to 8,400 crores. Our party has given a call. If the money is not released soon, then on 2nd October, we shall bring lakhs of people to Delhi to demand our share, our dues in respect of Marek. Sir, I do not want to reply to Mr. Nishikant Dubey. He is a man desperate to get into the ministry somehow or other. So he has to flatter the government. And he quoted all wrong history, which I don't want to go into. But I want to remind him that he belongs to an organization which did not participate in the August 42 movement. He belongs to an organization which was banned after Gandhiji's murder. I do not want to have any track with such organization and people representing it. Sir, before going further, I want to mention there are some ministers, sprinkling of ministers here, that ministers must control themselves. Earlier, Anurag Thakur went to a meeting in Delhi and said, "Goli maro, dash dash." And now Meenakshi Lekhi, minister from Delhi, is saying that don't speak against us. We shall send ED to your home.
I want to say that I come from the land of Tagore, who said, don't fear. আমি ভয় করব না, ভয় করব না। দুবেলা মরার আগে মরবো না ভাই, মরবো না। I shall not fear and I shall not die twice before dying actually. Sir, this government is a government of the heartless. They are sending delegations to West Bengal on any plea, but not one delegation has gone to Manipur, where our brothers and sisters are dying. Sir, I'll remind you that of what Mark Antony said in Julius Caesar. You blocks, I'll paraphrase it and say, you blocks, you stones, what you worse than senseless things. Oh, you hard hearts, cruel men of BJP. You have no compassion. That's why you have not gone to Manipur as all the opposition parties have gone. Sir, let me say a few words about Manipur. My young friend, Mr. Gaurav Gogoi, has very ably summed up the situation in Manipur. Manipur ethnic clashes between Meiteis and Kukis started on 3rd May 2023 and are still continuing. On 5th August, 5 people, 3 Meiteis and 2 Kukis were killed in Manipur in escalation of hostilities. So far, over 150 people have been killed. At least 100 women were raped and over 70,000 people have been displaced and 350 relief camps have been set up. The delegation from India which went met people in relief camps in Imphal and Churachandpur. Nishikant did not mention a single word about Manipur. This government wants to forget. Sir, the actual count may be higher. And now, these incidents in Manipur remind one of the riots in Rwanda between Hutus and Tutsis some years ago. The worst incident in Manipur came to light on 19th July when a video went viral showing 2 Kuki women being stripped, paraded naked on the streets and sexually assaulted by apparently Meitei men. Sir, are we living in a civilized country that this happens to our sisters? This is unimaginable. No action was taken by the police for more than 2 months until the video emerged. This was due to internet shutdown in Manipur, which, as Gaurav mentioned, is still continuing. The Prime Minister opened his mouth after 80 days since the start of violence, saying that his heart is full of pain and anger. But he has not visited Manipur till date. Now the Supreme Court has belatedly set up a 3-judge committee consisting of women judges. This is good because when the government fails, the highest court of the land has to take up the matter. Sir, till today, mobs of Meiteis are attacking Kuki villages who are retaliating with SLRs, AK-47, etc. Much of the arms are coming from abroad across a porous border and is funded by mainly poppy money, opium money. Police armories are looted. The government led by BJP Chief Minister Biren Singh, who is a Meitei, has failed to maintain law and order. I demand that he should be immediately dismissed and President's rule imposed on the state. Sir, one interesting thing, you are a doctor from Ahmedabad, you will realize that what was the Prime Minister doing from May to July this year when Manipur was burning. He visited 7 countries, in which USA from 20 to 23rd June, Hiroshima, Japan, 20th May, Australia, May 24, France, July 13 to 14, UAE, July 15, Egypt, to see the pyramids, 24 to 25 June, Papua New Guinea,
24 to 25 July 2023. And he was very proud that Joe and Jill Biden gave a private dinner at White House in his honor. हम कहते हैं ना साहब लोग पीठ ठोक दिया तो साहब लोग उसको प्राइवेट डिनर दिया, बहुत खुश हो गया। और हमारे बहन लोग उधर उनको इज्जत छीना जा रहा है। दिस इज आवर प्राइम मिनिस्टर। सर, इज आवर प्राइम मिनिस्टर ए रोविंग एम्बेसडर or a traveling salesman? Because he even went to Sikar in Rajasthan to campaign in the midst of all this. Now, the Prime Minister has to reply why he was visiting foreign countries when Manipur was burning. So let me come to some other points. The major failure of the government is to check price rise. Price of tomato is at 250 rupees a kg. He has failed to provide jobs. It is destroying social harmony. We have seen the communal riots in Nuh and Gurugram in Haryana. They are still continuing, polarizing the communities, destroying federalism. Sir, in Nuh, allegations are made that only Muslim houses are being demolished by bulldozers. Sir, the government is destroying federalism by sending useless governors to states to disturb state governments, as in West Bengal, Tamil Nadu, Maharashtra, and Delhi. Sir, the government has been weakening institution, Parliament to Election Commission. Modi never comes to attend Parliament. He has not replied to a single question in Parliament. I have seen many other parliaments. I have never seen a man like him, who as Prime Minister does not reply to a single question. He does not believe in parliamentary democracy, and maybe स्वागत राय जी, आप तो बहुत वरिष्ठ मेंबर हो। सर, प्रधानमंत्री जी का खराब बात आप अविश्वास की दरख्वास्त पर बोलो। मैं तो कोई प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री होते हैं, इस प्रकार से बातें मत करो। सर, आपको पर्सनल एलिगेशन मत करो। आपको सर, आप बहुत बड़ा डॉक्टर है। बैठ जाइए सर, आप बैठ जाइए। आप बीजेपी के हैं, लेकिन बड़ा डॉक्टर है, इसलिए मैं आपको इज्जत करता हूँ। चुप करो। सर, the central agencies, ED and CBI, they are used to target opponents and bring down opposition state government, as it happened in Maharashtra. BJP has a big washing machine. No, what? BJP has a big washing machine. When Ajit Pawar was in NCP, he was very bad. 70,000 crore irrigation scam. Now BJP's washing machine he has entered. Now he has become a good man. Amit Shah goes and praises him. Sir, I talk about demonetization. One mad decision by the Prime Minister. It caused chaos. 150 people died standing in queues for changing notes. Many MSMEs were totally wiped out. Sir, on farm bills, the government tried to press farm bills down the throat of the farmers. They resisted boldly, and ultimately government had to withdraw the farmer bills. But the farmers are still committing suicide. They are still committing suicide, and the promise to double farmers' income by 2022 is not fulfilled. Sir, PSUs are being disinvested. Banks are writing off 14 lakh crores NPS in the last 9 years. PSUs are being privatized, including profitable ones
like the LIC. Sir, I'm coming to the end of my tether. Sir, special advantages are given to some industrial houses, Tata's, Ambani's and Adani's. Adani got most of the airports, including Mumbai airport, by arm twisting, and then cement companies, and then land ports. Ambani's persuaded the government to stop import of laptops since it is bringing out laptops themselves. Tatas are buying Air India, are now buying out Vistara. Government has not given a statement on the Hindenburg research report on the Adani share scam till today. The Prime Minister avoids all discussion on Adani in the House. Sir, today LPG cylinders, as you may know, cost 1,200 rupees. Government earned above rupees 27 lakh crores by increasing duties on petroleum products. Petrol now costs rupees 106 and diesel rupees 92 per litre in my city. Sir, the Prime Minister does not fulfill his promises. He promised 15 lakhs for every household, did not fulfill. He promised 2 crore jobs per year, he did not fulfill. And this lack of compassion was displayed when, during the pandemic, a sudden lockdown announcement, lakhs of migrant workers were seen walking to their homes, some dying on the roadside. Hundreds of dead bodies were found on the banks of the river Ganga. Today, unemployment is the biggest issue. Multinational corporations are sacking large number of technical people, both India and abroad. During the pandemic, 1 crore jobs were lost. Sir, they speak big on nationalism, but China is still camping on Indian territory in Galwan, Ladakh, and Doklam, Sikkim. Government cannot do anything. Now the government wants to rewrite history, is planning to exclude the Mughal period from history books. Will foreign dignitaries not be taken to see the Lal Killa and Taj Mahal, which were built by Mughals? They are promoting people who are not actually good freedom fighters. V.D. Savarkar, on whom there may be a controversy, he pleaded mercy from the British to get out of cellular jail in Andaman in 1922. Bengali freedom fighters, they spent their full period in the Andamans. Savarkar got out. Kindly conclude. Sir, last question. Conclude. Last matter. Agya. Sir, the worst railway accident again showed the lack of compassion of the Prime Minister. 288 people died in a rail accident in Balasore. 1,000 were injured. The PM did not care to visit Balasore nor see the patients at the hospital. Our Chief Minister went, but the Prime Minister did not care to go. He does not care. He said, huh? Afterwards. Kindly conclude. Yeah. Sir, last. Professor, conclude. Sir, the government is in a hurry in introducing Vande Bharat trains and new stations. Safety is ignored. Today, truth does not come out. News channels are muzzled. Most of them are bought over by big business. Sir, that's why I want to say the Supreme Court has already expressed no confidence in the government. Thank you very much. Sir, Thank you. I'm finishing. Sir, 2 minutes. By setting up the 3-judge committee, sir, the Prime Minister will not win the 2024 election. He is scared. Thank you. Thank India you. has been formed. Thank you. He is now depending on inauguration of Ram Mandir. Thank you. Thank That will you. not. Lastly, sir, let me make a quotation,
read a quotation from John Donne, as quoted in Ernest Hemingway. He said, "Every man's death diminishes me, for I am involved in mankind. Therefore ask me not, for whom Thank the bell you. tolls, it tolls for thee." Thank you, It is Sagat Rai tolling ji. for the Thank Prime you. Minister Narendra Modi. Thank you, sir. थैंक यू। आप एक ब्रीफ इंटरवेंशन आप कर दीजिए, फिर सुप्रिया जी बोलेंगे। महोदय, मैं बहुत जरूरी सूचना आपको बता रहा हूं जानकारी के लिए कि ईडी और सीबीआई की रोज बात होती है। बात मियां, मैं बता एड्रेस टू मी, एड्रेस टू चेयर। ये ईडी और सीबीआई इसी संसद ने बनाया था, और ईडी और सीबीआई का छापा में जो अरबों रुपए पकड़े जा रहे हो, किसके बाप के पैसे होते? बहुत बहुत धन्यवाद। ये श्रीमती सुप्रिया सुले जी। एक जस्ट अ मिनट, निशिकांत जी। स्पीकर्स डायरेक्शन 115 रूल 115 स्पीकर्स डायरेक्शन। चेयरमैन बनिए सर, चेयरमैन बनिए। 115 स्पीकर्स डायरेक्शन सर। ठीक है, we will see it later on. सुप्रिया सुले जी, सुप्रिया सुले। आप चेयरमैन बनिए। मेरा टाइम मत कट करिए इनके कारण। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। यू आर वेरी सीनियर पर्सन, आप बैठ जाइए। सुप्रिया सुले जी, गो टू योर प्लेस, टेक योर प्लेस। But I don't want to be disturbed. हाँ, यू कैन। Sir, please start my. सुप्रिया जी, सुप्रिया सुले जी, प्लीज टेक योर प्लेस। Sir, I stand here today on behalf of the NCP and the India team to speak in support of this no confidence motion. Sir, why do you really think we brought this no confidence motion? It's because we are representative of the Indian citizens. And that's why the sentiment of the nation is what we are standing here for. This is what people tell us. What does a member of parliament do? He is the voice, or she is the voice of what the citizens of India feel. And that's our moral duty. And I thank Gaurav Gogoiji for moving this motion, which is the true emotion of an Indian citizen today. There's a Mr. Friedman, who's one of the best economists the world has ever seen. I'd like to quote him by saying, one of the great mistakes is to judge policies and programs by their intention rather than their results. I'm not taking away from the intention of this government, or what are really the outcomes of the results is something which deeply pains me, hence the no confidence motion. I will be coming to the main point, which is Manipur. But there are a few short points I'd like to make before. Whenever I think of this government, the first thought that comes to my mind, the word that comes to my mind is hubris. I'd like to quote the Mahatma Gandhi. It is unwise to be too sure of one's wisdom. Every time this government talks, they're only not talking about the moment. It's the future. हम तो आने वाले, आप तो खत्म होने वाले. Every opposition तो है ही नहीं. This is a democracy. We should encourage each other. And while this is going on, the only word I can think of for the attitude and the approach, even the ministers, when we are sitting here, say, अरे इनको तो हाउस चलाना ही नहीं है, ये नहीं करना चाहते. अभी तो जुम्मे जुम्मे आए हो राज्यसभा से. And then you're going to judge us. भूल गए, आप तो थे नहीं तब. पता नहीं कौन से गवर्नमेंट में काम करते थे तब. They're judging all members of parliament. We are not officers, we are public servants. प्रधान सेवक जैसे प्रधानमंत्री बोलते हैं, हम भी सेवक ही यहाँ बैठे, उसी के लिए तो खड़े हैं यहाँ. So it's the attitude of this government is hubris, there is no other word. And why are we feeling? जैसे नौ रत्न, इनको बड़ा शौक है ऐसा बोलने का. So नौ रत्न 9 साल, because they had this big campaign, all the ministers were sent all over the country to talk about the new 9 points. In 9 years, the achievements, in short, I'll say. What is in 9 years the great achievements of this government? Is state governments toppled by the BJP? Is this fair democracy? Price rise, महंगाई बहुत हो गई, महंगाई की मार अब की बार शायद सबको याद होगा. एलपीजी की प्राइस, कर्नाटक इलेक्शन ने दिखा दिया एलपीजी का क्या होता है फिर. इंस्टीट्यूट ब्रोकन, हाउ मेनी इंस्टीट्यूट्स हैव बीन ब्रोकन.
जुमले पे जुमला। आई लाइक अमित शाह जी, सच बोलते हैं, आपकी बात साइड से बहुत कम। ये वो या गडकरी साहब बोले थे कि ये जुमला ये गले की हड्डी हो गया, ना नीचे जा रही है ना बाहर आ रही है। दैट इज द प्रॉब्लम। Indexes which have shown where globally India has fallen. Anti-federal, cooperative federalism का तो बोल के हम थक गए. Indicators of the economy, which I will be coming to in 2 minutes, and law and order, which is alarming in Manipur, Haryana, J&K, and 1 or 2 cases of Maharashtra. Sir, 9 years में, 9 साल में 9 सरकारें बीजेपी ने गिराई है. अरुणाचल, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, कर्नाटका, गोवा, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी और महाराष्ट्र 2 बार. This is it. And what is it? 7 sins of महात्मा गांधी. Politics. उस दिन मुझे अच्छा लगा जब अमित शाह जी बोल रहे थे सिद्धांत के बारे में. The 7 sins of महात्मा गांधी, उसमें का एक है पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स. और मुझे याद है जब बीजेपी सरकार में नहीं थी तब कह रही थी पार्टी विद अ डिफरेंस. हाउ आर यू अ पार्टी विद अ डिफरेंस? 9 साल में 9 सरकारें गिनवाई है मैंने. फिर बहुत हो गई महंगाई की मार. आई थिंक प्रोफेसर रॉय जस्ट टच्ड ऑन सम ऑफ इट. ही ओनली स्पोक अबाउट टमाटो. प्याज का क्या है, दाल का क्या है, आटे का क्या है, नमक का क्या है, चावल का क्या है, तेल का क्या है, चाय और दूध. टोटल जब यूपीए की सरकार थी ये सारी थाली 500 रुपए के अंदर बचती थी. आज भाव आप देखेंगे तो 1000 के ऊपर इस सब का हो. दैट इज द फूड इन्फ्लेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. बहुत हो गई महंगाई की मार. प्याज के बारे में और दूध का मैं छोटा उदाहरण दूं. प्याज के बारे में मैंने जब गलत महाराष्ट्र में इतना प्याज था, मैं विनती करके थक गई कॉमर्स मिनिस्ट्री को, पीयूष जी गोयल को मैंने ट्वीट भी किया था, उनका जवाब भी आया था कि आप ये प्याज जो महाराष्ट्र में पड़ा है कोई नहीं ले रहा है, उसको प्लीज आप एक बाहर भेज दीजिए. बिकॉज ग्लोबली there were less onions. There was no production, but India had a surplus. Why did you do this? This is why we have no confidence in this government. Milk. आज यहाँ से जब दिखा रहे थे आप प्रोडक्शन, उसमें दिखा रहे थे मिल्क का बहुत अच्छा प्रोडक्शन है. Why I don't have I don't have the confidence in this government because it's anti-farmer. Farm laws के बारे में आपने बोला, डबलिंग ऑफ इनकम के बारे में बोला. कौन सा इनकम डबल हुआ? दूध के बारे में इसी सरकार ने एक ऑर्डिनेंस, एक पेपर निकाला था कि we will allow import of milk from abroad. When there is surplus in this country, यहाँ के किसान को भाव नहीं मिल रहा है तो आप बाहर से क्यों दूध ला रहे? प्याज तो नहीं भेज रहे, प्याज जाने के लिए मनाही है, यहाँ किसान मर रहा है, लेकिन बाहर से दूध आप लाएंगे वो अलाउड है. How can we have confidence in this government, sir? How can we have faith in this government? Indian Raki, Indian, I'm not yielding. Modi ji, I will happy to table. Mr. Pawar had written to the minister, I'll be happy to table it. I will 100%. I will table it. I will table it if he is. I will 100% table it. I have no problem because Mr. Pawar had only written to one of your ministers, and that ordinance, that letter had come to government of Maharashtra. I'd be happy to do it. Prashant Bhushan ji, there's a tweet I remember where there were issues raised. अच्छे दिन कहते थे आप, अच्छे दिन आएंगे. मैं पूछना चाहती हूँ, health and survey index, India has gone down. Hunger index, down. Human freedom index, down. World happiness index, down. Environment protection index, down. Gender equality, down. Democracy, down. So many, और कितने भी पढ़ा हुआ टेबल कर दूंगी सर. Anti cooperative federalism, कितने आपको गिनवाऊं जा, आप तो थक गए मेरा भाषण सुन सुन के. अभी मैं संक्षेप में बोलूंगी because I think Saugata Babu has already spoken that point, so I won't repeat it. सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास. Horrific death of 288 people. वंदे भारत की बात करते, अच्छी बात है, मैं उसका स्वागत करती हूँ, लेकिन वंदे भारत के साथ अगर गरीब ट्रेन और रहते, गरीब रथ होते, तो मैं भी इनके साथ बोलती कि अच्छी बात है. और वंदे भारत में कौन सी ट्रेनें रुकती है? मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 3 स्टेशन है, डाउन, नीरा, बिगवन. सब ट्रेन वहां की बंद कर दी है. नो स्टॉपेजेस. क्या करूं उस वंदे भारत का? ऐसी जाती है जब से 1 सेकंड में. बस देखिए जाए, बच्चों को दिखाए कि यूपीए की सरकार जब थी ना तो यहाँ 10-10 ट्रेनें रुका करती थी. ये जब एनडीए की सरकार आई ना बेटा, ये बहुत अच्छा है, अच्छा है, ये ट्रेन जाती थी, आज रुकती नहीं है. और वंदे भारत गरीब के लिए नहीं है, गरीब रथ गरीब के लिए है. जहां डाउन स्टेशन में रुकती थी ट्रेन, वहां का किसान पूना जाता था.
वहां का मेहनत करने वाला बच्चा सीखने के लिए वहां जाता था। वहां के जो लोग हैं लेबर डिपार्टमेंट, वो वहां से उस ट्रेन से जाते थे। आज एक दिन भी नहीं रहती, एक ट्रेन वहां नहीं रुकती। हम स्टॉपेज मांग मांग के थके। और परसों जो प्रधानमंत्री का प्रोग्राम हुआ था, उसमें बड़ा कार्यक्रम है, बड़ा मंडप लगा था, बड़ा चाय कॉफी हुआ था, लेकिन दौड़ में ट्रेन नहीं। वंदे भारत रुक रही है। बस प्रोग्राम तो हो गया और एक जुमला हो गया। मैं वंदे भारत के खिलाफ नहीं हूँ, डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये है। मैं और बोलना चाहती हूँ सर, सेंट्रल गवर्नमेंट डेट, सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट क्या है आज, जिसके बारे में थोड़ा सा प्रोफेसर रॉय बोले। इंक्रीज इन सेंट्रल गवर्नमेंट डेट, इकोनॉमी की बात बोलते हैं, 55.87 लाख करोड़ 2014 में था, which has become 155.6 lakh crores is the debt of this government. 178.5 times central debt. How are we going to pay this? This is central government debt. There's external debt. External debt in India has gone from USD 6 to 4.7 billion at the age of March 23, from US 440, 41% interest. How are you going to pay this? By selling the family silver? फिर पैसा वापस कैसा करेंगे? इसीलिए आपको LIC बेचना पड़ रहा है, IDBI बेचना पड़ रहा है, पता नहीं ONGC भी कल बेच दे, पता नहीं क्या करेगी ये सरकार. This is why we are no confidence in this motion. How is this economy going to work? Cash in circulation, demonetization कर दिया, कोई cash नहीं करेगा. Cash in circulation today has increased. It was 12 point. फिर ये कह देंगे economy का size बढ़ गया, but percentage of the money is the same. How are you saying cash in circulation was 12.83 lakh crores? It has become 33.48 lakh crores in 20. Nearly 1.6% increase in bank notes in circulation. तो demonetization करके क्या पाया आपने? Non-performing assets, 18.2 lakh crores. Non-performing assets. ये अगर write off कर रहे हो तो किसान का भी कर दो. ये किसका आपने 18.2 लाख क्रॉस, पता नहीं इसमें जीरो भी कितने हैं, इतनी गिनती मुझे तो नहीं आती. Another thing, India renouncing Indian citizenship, high net worth individuals, 12 lakh have left this country. How will the economy grow of this country? Doubling of farmers. Now, if these are the questions, how can we trust this government? महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान आप देख रहे हैं उसके हाल क्या है. How can we support this government? साहब आप बताइए. Now is the main 2 minutes only. Last point, sir, which is the most important. That's why yes, sir, is this shameful blunders in Manipur of the state government. And I demand that just today after this, the chief minister must resign. How can you allow this? Sir, how this is? People dead, 179. People displaced, 60,000. Relief camps, 350. Still in camps, 40,000 people. Houses burned, 3,662. Religious places burned, 321. Companies by the companies of Central Force deployed, 161. And cases of rioting, murder, rape, 10,000, sir. 10,000 se zyada. Have we become so insensitive? This is the problem with this government. And I want to seek a clarification, which Gaurav Gogoi touched in a very small way, because I'm very confused. So I would like to ask this question to this government, that there is a PIL filed in the NI court. This Mr. Hawkip, I may be pronouncing his name wrongly, of the United Kuki Liberation Front said that he had written to the Home Minister Amit Shah ji regarding a claim that UKLF, the United People's Front, had helped BJP candidates win in 2017 assembly as per arranged with some other chief minister. I don't want to name him. What is the, and a senior BJP leader. Now, these are organizations which are grey. So is this government anti-national? Is my question. I'm asking a question. I'm not making an allegation. This is what is come in newspapers. I'm not commenting on anything that's gone wrong anywhere. I want to ask that Mizoram today are women. Doesn't matter who they are, they're Indians first. Yes. किसी की तो बेटी है, किसी की तो बहू है, किसी की बहन है, किसी की बीवी है. Will you allow this to happen and shame the women of this country? And this is what this government stands for. How can you ask your conscience, अंतरात्मा से एक बार पूछ लीजिए, how can you support a government like this? This is not about them versus us. This is about the dignity of the woman of this nation. Now the government is going to keep quiet. How are you going to allow? I'll make one small solution to this government. What should this government really do?
हर देश में किसी की भी, महाराष्ट्र में भी हो भी किसी, राजस्थान की हो, किसी की भी हो, वो किसी की भी बेटी है. Two wrongs don't make a right. And I would like to quote just one small point, sir. Please. I would like to make a suggestion to this government. Okay, now I'm not only criticizing, I'm making a suggestion. I would like to quote the Mahatma in this. It says, I offer you, what should they do now? Is what I'm referring to them. What should they do? I offer you peace. I offer you love. I offer you friendship. I see your beauty. I hear your need. I feel your feelings. My wisdom flows from the highest source. I salute that your source in you. Let's work together for unity and peace. That's what Manipur needs. These guns are not going to solve all our problems, sir. And again, I want to remind this government that 2024 is their only goal. I'd like to quote Julius Caesar, just since Professor Roy talked about it. It's only hubris if I fail. In the epic poem Paradise Lost by John Milton, the character of the Satan displays hubris when he attempts to rebel against God's rule in heaven, and when he eventually declares that it's better to reign in hell than serve in heaven. So I think this government needs to rethink. I stand here by India for the larger good of this nation and the dignity of every citizen who deserves it, and this government is failing the poor and the honest people of this country. Thank you. सभापति महोदय, कि आपने मुझे अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी पार्टी की ओर से अपना मत प्रकट करने का यहाँ पर अवसर दिया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी ने 2018 में ही कहा था कि विपक्ष जो है मेरे खिलाफ जो है 2023 में अविश्वास प्रस्ताव जो है लेकर आए, और आज वैसे ही हो रहा है। 2018 में विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था, और 2019 में 2014 से भी ज्यादा जो है सांसद सदस्य एनडीए के यहां पर चुनकर आए, और 2014 में एनडीए की सांसदों की संख्या थी 336, और 2019 में वो पहुंची 353, और फिर से आज अविश्वास प्रस्ताव जो है यहां पर लेकर आई है विपक्ष। फिर से 2024 में जो है ये संख्या जो है 400 पार हो जाएगी। आज यहां पर चर्चा जो है अविश्वास की नहीं, यहां पर चर्चा जो है वह अविश्वास के खिलाफ जनविश्वास की है, क्योंकि जनविश्वास जो है वो एनडीए के साथ है, मोदी जी के साथ है। आपके खिलाफ तो 2 बार लोगों ने ही अविश्वास प्रस्ताव जो है 2014 में और 2019 में पहले ही पारित कर चुकी है, और अभी 2024 में जो है जनता जो है हैट्रिक करने जा रही है। महोदय, इन्होंने अपना नाम जो है यूपीए का बदलकर इंडिया अलायंस कर दिया है। इन्हें लगता है कि इंडिया नाम रखने से जो है भारत के लोग इनके साथ हो जाएंगे, लेकिन मुझे यहां पर कहना है कि इन्होंने नाम जो बदला है यूपीए, क्योंकि यूपीए की नाम की इनको शर्म आती है, क्योंकि यूपीए जो है, यूपीए का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में जो है स्कैम, घोटाले, भ्रष्टाचार याद आते हैं लोगों को। 2G घोटाला हो, अगस्ता स्कैम हो, आतंकी हमले हो, रिमोट कंट्रोल वाली सरकार हो। इसलिए 2014 में लोगों ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर जो है मोदी जी को जो है इस देश की कमान सौंपी। आज यहां पर ये कहते हैं कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। मुझे लगता है कि एक आदमी के विरोध में ये सभी लोग जो है इकट्ठा आ रहे हैं, जिसका कोई नेता नहीं है, जिसकी कोई नीयत नहीं है और जिसकी कोई नीति नहीं है। ऐसा अलायंस जो है यहां पर खड़ा हुआ है। 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए 1 और यूपीए 2 ने देश पर राज किया, लेकिन देश को क्या मिला? सिर्फ घोटाले और भ्रष्टाचार।
आतंकी हमले इतने हुए कि एक भी इस देश का बड़ा शहर जो है इस आतंकी हमलों से बचा नहीं आ रहा। उस पर भी आज ये इंडिया अलायंस, नाम इंडिया देखकर समझते हैं कि लोगों को जो है डेमोक्रेसी के नाम पे यहां पर बहलाया जा सकता है। आज इस इंडिया अलायंस में हर एक नेता जो है पीएम इन वेटिंग है। हर एक नेता को लगता है कि मैं पीएम बन जाऊं, क्योंकि इस टीम के पास कोई कैप्टन नहीं है, कोई कैप्टन नहीं है और इनको मैच लड़नी है और वर्ल्ड कप जीतना है। हमारे मराठी में एक कहावत है, ऐकली पाहिजे आपण, अडला हरी गाढवाचे पाय धरी। इसका मजबूरी इंसान को क्या क्या करने पर मजबूर कर देती है। लेकिन ये जो विपक्ष है, ये विपक्ष नहीं, ये अलायंस नहीं, ये विनाश का गठबंधन है। यहां पर सिर्फ एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई नहीं है, बल्कि स्कीम वर्सेस स्कैम की लड़ाई है। यहां पर गए अनेक यूपीए 1 और यूपीए 2 और उसी के साथ में गए 10 साल में एनडीए के अलायंस में हमने जो उपलब्धियां यहां पर हासिल की और इनकी जो उपलब्धियां है वो मुझे, मेरे पास जो है ए से जेड तक जो है यहां तक इसकी सूची है। इनके समय ए से आदर्श स्कैम होता था, एनडीए के समय ए से आत्मनिर्भर भारत, बी से बोफर स्कैम, यहां पर बी से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सी से कॉमनवेल्थ गेम्स, यहां पर सी से क्लीन एयर प्रोग्राम, ये ई से ईपीएफओ स्कैम, यहां पर ई से एनर्जी रिफॉर्म्स, एफ से फॉर्डर स्कैम और यहां पर एफ से फेम स्कीम, जी से 2G स्कैम, यहां पर गोकुल मिशन और एच से हर्षद मेहता स्कैम और यहां पर हाउसिंग फॉर ऑल। ऐसी बड़ी सूची है, ये जेड तक है सूची। अगर ये भूल गए रहेंगे, आज बैठे नहीं यहां पर। आज यहां पर मणिपुर की बात हो रही है। मणिपुर में जो हो रहा है हम सबके लिए चिंता का विषय है, इसकी हम निंदा करते हैं और इस पर गंभीरता से विचार होना जरूरी है और कार्रवाई भी होनी जरूरी है। विपक्ष सिर्फ मणिपुर पर राजनीति करना चाहता है। 2014 तक नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में से 4 राज्य में कांग्रेस की सत्ता थी और 1 राज्य में जो है लेफ्ट की सरकार थी। आज तकरीबन सारा नॉर्थ ईस्ट जो है वो एनडीए के साथ है, क्योंकि कांग्रेस नॉर्थ ईस्ट के बारे में कभी गंभीर नहीं थी, इसलिए कांग्रेस को छोड़कर जो है एनडीए, मोदी जी का हाथ जो है नॉर्थ ईस्ट ने थामा। आज वहां पर केंद्रीय मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, इस नॉर्थ ईस्ट में जो है 50 से ज्यादा बार जो है वहां पर जा चुके। यहां पर नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा पीस अकॉर्ड हो 2019, बोडो पीस अकॉर्ड हो 2020, ब्रू रिहेबिलिटेशन अग्रीमेंट हो, आसाम मेघालय बाउंड्री अग्रीमेंट हो, ये सब बड़े कार्य जो है 2014 से 2023 के बीच में जो है सरकार ने की। यहां पर डेवलपमेंट का अगर विषय ले तो 2014 से 2019 मात्र 5 सालों में यहां पर 2731 किलोमीटर की राष्ट्रीय राजमार्ग जो है यहां पर बनाए गए और 2009 से 2014 10 सालों में मात्र 1000 किलोमीटर के मार्ग यहां पर बनाए। यहां पर 65 सालों में सिर्फ 9 एयरपोर्ट थे 7 राज्यों के लिए, इसकी संख्या बढ़कर जो है आज 16 हो गई है। 2014 से पहले यहां पे रेलवे बजट का आवंटन सिर्फ 2000 करोड़ था, लेकिन आज जो है इसका 10,200 करोड़ का रेलवे आवंटन जो है बजट जो है इसका है। ये अंतरिक्ष सुरक्षा के बारे में यहां पर बात कर रहे। यहां पर मुझे लगता है कि जिन्होंने इस देश पर 65 साल तक राज किया, यूपीए कार्य में 10 सालों में
जितने आतंकी हमले यहाँ पर हुए, मुझे लगता है कि हर एक बड़ा शहर जो है यहाँ पर उसके ऊपर जो है आतंकी हमले हुए। 2006 में मुंबई ट्रेन बम विस्फोट हो, यहाँ पर गौरव गोगोई जी बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी मौन है। मैं पूछना चाहता हूं, गौरव जी को यहाँ पर नहीं है वो अभी, कि 2006 में मुंबई में ट्रेन विस्फोट हुआ तभी कौन मौन था? 2008 में जयपुर बम विस्फोट हुआ तभी कौन मौन था? यहाँ पर 2008 में बैंगलोर में सीरियल ब्लास्ट हुए तभी कौन मौन था? यहाँ पर 2008 में मालेगांव बम विस्फोट हुआ तभी कौन मौन था? यहाँ पर मुंबई में जो फाइनेंशियल कैपिटल है वहां पर 26/11 हुआ तभी कौन मौन था? और 2010 में पुणे में जर्मन बेकरी हुई तभी कौन मौन था? और 2013 में हैदराबाद में बम ब्लास्ट हुए तभी कौन मौन था? ये जवाब भी जो है मुझे लगता है तभी कौन मौन था? सिर्फ रिटेलिएशन के नाम पर जो है हमेशा चिट्ठी लिखकर जो है अपनी नाराजगी प्रकट कर देते, लेकिन जब ये पुलवामा हुआ तभी बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके जो है मोदी जी ने उत्तर दिया। जब ही उरी हुआ तभी सर्जिकल स्ट्राइक करके जो है मोदी जी ने यहां पर दुश्मनों को उत्तर दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी चिट्ठी और मैसेज के दिन खत्म हो गए, अभी कुछ करेंगे तो सीधे मिसाइल आएगी। आज यहाँ पर मनीष तिवारी जी नहीं है, मनीष तिवारी जी ने अपने एक बुक में लिखा था 26/11 के बारे में, फॉर अ स्टेट दैट हैज नो कंपंक्शंस इन ब्रूटली स्लॉटरिंग हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट पीपल, restraint is not a sign of strength, it is perceived as a symbol of weakness. There comes a time when action must speak louder than words. 26/11 was one such time when it just should have been done. ये खुद ही कह रहे हैं कि हमने कुछ किया नहीं, तो आज इनको जो है मोदी जी को ये सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी जी जो है मौन है यहाँ पर। मुझे लगता है कि आज देश जो है मोदी जी के हाथों में बहुत सुरक्षित है, इसलिए पूरे विश्व में यह संदेश गया है कि मोदी सरकार आतंकियों के सामने जो है झुकने वाली नहीं है। यहां पर गए 9 सालों में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ मैं यहां पर बताना चाहूंगा। गए 9 सालों में जो है नेशनल हाईवेज 54,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे जो है बनाए गए। एयरपोर्ट्स की संख्या जो है 74 से बढ़कर जो है 148 हुए। रेलवे जो है 1218 रेलवे स्टेशन के अपग्रेडेशन हुए। वंदे भारत जो है ट्रेन यहां पर शुरू हुई। स्मार्ट सिटीज बनाए गए। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जो है महिला सम्मान को देखते हुए हर घर जो है शौचालय बनाने का काम यहां पर किया। और स्वतंत्र के बाद आज तक लोगों को नल से जल नहीं मिल रहा था, लेकिन आज जो यहाँ पर जो है लोगों को हर घर जो है नल से जल देने का काम जो है यहाँ पर सरकार कर रही है। आयुष्मान भारत हो और कोविड में जो है 2 बिलियन वैक्सीनेशन जो है इस देश में कराए गए और मैत्री के अंतर्गत जो है बाकी देशों में भी जो है 29 करोड़ वैक्सीन जो है मोदी जी ने भेजे यहाँ पर। आज हमारी इकोनॉमी जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और डिजिटल ट्रांजैक्शंस में जो है 40% हमारा हिस्सा है। स्टार्टअप में 108 नए यूनिकॉर्न्स यहाँ पर बने हैं, एफडीआई में भी नंबर आगे है। तो ये जो है ये उपलब्धियां जो है गए 9 वर्षों की है। मैं कुछ अभी महाराष्ट्र से आता हूं, मुंबई से आता हूं, तो महाराष्ट्र की बात यहां पर करूंगा कि किस प्रकार से जो है महाराष्ट्र में गए 2.5 साल में जब ये सरकार थी तो किस प्रकार से काम जो है यहां पर हो रहे थे, किस प्रकार से जो है वो केंद्र के सभी प्रोजेक्ट जो है यहां पर रोकने का काम जो है यहां पर गए 2.5 साल में जो है ये सरकार कर रही थी। बुलेट ट्रेन हो, मेट्रो हो, इनके खुद के सरकार में मुंबई नागपुर जैसा महामार्ग हो उसको भी रोकने का शुरुआत के कालों में जो है इन्होंने कोशिश की। कारशेड जो है
कारशेड जो है यहाँ पर मुंबई में, कारशेड एनवायरमेंट के नाम पर जो है कारशेड बनने इन्होंने दिया नहीं, और आज वो कारशेड जो है आरए में नहीं बनने के कारण 10,000 करोड़ जो है ज्यादा लागत जो है आज मेट्रो में लगने वाली है। ये किसके जेब से पैसे जाने वाले हैं? किसके जेब से पैसे जाने वाले हैं? जो टैक्स भरते हैं उनके जेब से पैसे जाने वाले। ऐसा काम जो है यहाँ पर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो इनको जरूरत नहीं थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, सब इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों पर जो है रोक लगाने का काम इन्होंने किया, क्योंकि घर के बाहर ये निकलते नहीं थे, इनको इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत ही नहीं थी। एक गए 2.5 सालों में जो है एक अलग रिकॉर्ड जो है इस महाराष्ट्र में प्रस्तापित हुआ। निशिकांत जी, 2.5 साल में जो है 2.5 साल में एक नया रिकॉर्ड यहाँ पे बनाया कि 2.5 साल में सिर्फ 2.5 दिन मंत्रालय जाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है हमारे मुख्यमंत्री जी ने बनाया था। ऐसा काम जो है यहाँ पर गए 2.5 साल में शुरू था। आज कुछ लोग जो है यहाँ पर, मैंने सुना परसों भी कह रहे थे कि गद्दार लोग के बीच में जो है यहाँ पर अमित शाह जी बैठे। मुझे पूछना है इनको कि 2019 में जब भी आप इलेक्शन लड़े तभी आप किसकी फोटो लगाकर जो है इलेक्शन लड़े, और किसके अलायंस में जो है आप लोगों के सामने वहां पर गए, और लोगों ने 2019 में जो है मैंडेट जो है शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को जो है मैंडेट वहां पर दिया था। लेकिन चुनाव के बाद ऐसी परिस्थिति बन गई कि इनको लगने लगा कि अभी मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, और बाला साहब के विचार क्या होते हैं, हिंदुत्व के विचार क्या होते हैं, उसको कौन पूछता है। तो आज जो है गठबंधन की सरकार जो है एमवीए वहां पर प्रस्तापित की। हिंदुत्व के विचार जो है उसको बेचने का काम, बाला साहब के विचारों से दूर जाने का काम जो है इन्होंने किया। यहां पर चुनाव के दरमियान एक यहां पर मुझे बाला साहब जी का जो कहते थे वो मैं यहां पर कहना चाहूंगा। मैं शिवसेना की कभी कांग्रेस नहीं होने दूंगा, अगर ऐसा हुआ तो मैं मेरी दुकान जो है यहां पर बंद कर दूंगा यहां पर। और वो कहते थे कि चुनाव में दरमियान आप एक दूसरे को गालियां देते रहते हैं और चुनाव के बाद गठबंधन करते हैं, तो लोगों के सामने किस मुंह से आप जाएंगे। ये बाला साहब कहते। तो इन्होंने भी ऐसा ही किया, चुनाव एक के साथ लड़ा और फिर उसके बाद चुनकर आने के बाद जो है अपनी कुर्सी के लिए जो है आपने सभी विचार जो है आज विचार बाजू में रखकर एक अलग अनैतिक सरकार जो है वहां पर बनाई। समाप्त कीजिए सर, खत्म कर रहा हूं जी। यहां पर कभी किसने सोचा नहीं था कि कांग्रेस के साथ कभी शिवसेना का गठबंधन होगा। सपने में भी कभी निशिकांत जी कभी किसी ने सोचा नहीं था, लोगों ने भी सोचा नहीं था। लेकिन लोगों के साथ, मतदारों के साथ जो है सही मायने में गद्दारी करने का काम जो है इन सभी लोगों ने, जिसने सरकार बनाई उन्होंने किया। 13 करोड़ लोगों के साथ, 13 करोड़ वोटर के साथ जो है गद्दारी इन्होंने। हमने तो बाला साहब के विचारों को आगे लेके जाने का काम यहां पर किया। यहां पर इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ भी इन्होंने अलायंस किया, जिन्होंने जो है कार सेवकों पर जो है गोलियां चलाने का काम किया। आज उनके आज हनुमान चालीसा भी पढ़ने पर जो है महाराष्ट्र में निशिकांत जी रोक थी। जो हनुमान चालीसा, मुझे पूरी हनुमान चालीसा आती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति जो लोक जागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ वज्रो राजे, कान पूज जनेऊ साजे, कंठ शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करे को आतुर। चलिए पूर्ण कीजिए। हम बाला साहब के विचारों पर चलने वाले लोग हैं, हिंदुत्व पर चलने वाले लोग हैं। यहाँ पर सिर्फ नाम लेकर जो है हिंदुत्व का नाम खाली नहीं लेते हम लोग। यहाँ पर जिन्होंने
जिनको जो है हनुमान चालीसा यहाँ पर पढ़नी थी उनको सर उनको जेल में डाला गया सर। आपको जब मौका मिलेगा आप बोलिएगा अपनी बात जी। उनको जेल में डाला गया और उनके ऊपर देशद्रोह का आरोप जो है वहां पर लगाया गया। जी जी जो सावरकर के विचारों पर हमारी शिवसेना पार्टी बनी। अब बैठिए, शिवसेना पार्टी बनी प्लीज बैठिए। और शिवसेना पार्टी बनी और सावरकर के विचारों को जो है बाला साहब भी मानते थे। आज जो लोग जो है सावरकर जी को गाली यहाँ पर देते हैं, बड़ा बुला कहते हैं और उसके साथ में जो है आज उनके गोदी में जाकर बैठने का काम जो है ये पाप जो है कुछ लोग यहाँ पर कर रहे हैं। यही इंडिया है इनकी। पत्रकारों को जो है जेल में डालने का काम यहाँ पर किया और ये डेमोक्रेसी बचाने का काम अभियान जो है यहाँ पर चला रहे। सर खत्म कर रहा हूं सर। आज यहाँ पर मुझे कहने में बहुत ही यहाँ पर शर्म आ रही है कि कोविड के समय जब भी पूरा देश जो है कोविड से लड़ रहा था, यहाँ पर एक तरफ जो है प्रधानमंत्री जी यहाँ पर लोगों को वैक्सीन मिले, लोगों को ऑक्सीजन मिले इसलिए लड़ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ जो है मुंबई में इस कोविड के दरमियान जो है भ्रष्टाचार कैसे हो इसकी व्यू रचना करने का काम जो है कुछ लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और बहुत ही शर्म के साथ सर खत्म कर रहा हूं, बहुत ही शर्म के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि बीएमसी इतनी बड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसके पूर्व महापौर पर जो है एफआईआर दर्ज हुई। क्यों दर्ज हुई? क्योंकि बॉडी बैग जो है बॉडी बैग हमने थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 350 रुपए में खरीदे, वही बॉडी बैग जो है 6,719 रुपया में खरीदने का पाप जो है इन लोगों ने यहाँ पर किया, इसलिए एफआईआर जो है इन पर हुई। जी 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 सीएम बस अब अंतिम वाक्य बोल दीजिए सर। अंतिम कर रहा हूं जी। तो मुझे लगता है कि आज जो है आज यहाँ पर सही मायने में जो लोगों को चाहिए वो सरकार जो है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो है यहाँ पर स्थापित हुई है। तो आज गए 1 सालों में जो है अनेक ऐसे कार्य जो है यहाँ पर महाराष्ट्र में हुए हैं। मेट्रो के 350 किलोमीटर के रेल लाइन्स हो, ट्रांस हार्बर लिंक हो, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन हो, यूनिवर्सल हेल्थ केयर को बढ़ाकर जो है 1.5 लाख से 5 लाख हम लोग ने किया। शासन अपलादारी इसके माध्यम से जो है लोगों को 1.5 करोड़ से ज्यादा बेनिफिशियरीज यहाँ पर बनाए। महिलाओं को बस में जो है 50% कम दामों में जो है वहां पर सफर। अपना दवाखाना जो है 700 से ज्यादा अपना दवाखाना। सर खत्म करो सर। लास्ट वन। मैं कंक्लूजन में सर ये कहना चाहूंगा कि सभापति महोदय, औरंगजेब ने संभाजी महाराज की हत्या की, लेकिन 70 सालों में औरंगाबाद का नाम बदलने का काम हिम्मत जो है इन कांग्रेस में नहीं हुई। लेकिन गई 1 साल में जो है औरंगाबाद का नाम बदलकर जो है संभाजी नगर करने का काम किया और उस्मानाबाद का नाम बदलकर जो है धाराशिव किया। तो मैं लास्ट लाइन। तो मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करते हुए, छत्रपति संभाजी महाराज की स्मृति को याद करते हुए, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए शिवसेना विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अध्यक्ष महोदय, बड़े मच्छर हैं भाई। अविश्वास प्रस्ताव में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, जो संयुक्त विपक्ष द्वारा लाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे थे, मिनिस्टर कह रहे थे कि हमको राजस्थान में चर्चा करनी चाहिए, जो महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं। गुजरात की चर्चा करनी चाहिए, छत्तीसगढ़ की चर्चा करनी चाहिए, तो मध्य प्रदेश की भी चर्चा होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश की भी जरूर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि आंकड़े बताते हैं एनसीआरबी के कि हर रोज हर 3 घंटे में एक महिला का शारीरिक उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में होता है। हर 3 घंटे में एक महिला का शारीरिक उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में हो रहा है
और उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार और ये डबल इंजन की सरकार इस बात का संज्ञान नहीं ले रही है। सर, मणिपुर की जो घटना हुई है सर, यह कोई मामूली घटना नहीं है, ये बहुत ही संवेदनशील घटना है और सर सरकार का रवैया बहुत ही संवेदनहीन रहा है इस मामले को लेकर। सर, यह सरकार अहंकार में डूबी हुई सरकार है, द्रव, मद और दम में डूबी हुई सरकार है सर। It was a complete violation of human rights, destruction of human rights, and using women as instrument for perpetrating violence is simply unacceptable in the constitutional democracy, sir. Very good. Sir, और इस पूरे कांड की सर निंदा पूरे विश्व में हुई है और हम भारतवासियों का सर शर्म से झुका है सर इस घटना को लेकर। सर, इट वाज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड एथनिक वायलेंस। सर, अगर विजुअल्स सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं निकल के आते तो किसी को भी नहीं पता चलता कि क्या हुआ है मणिपुर में सर। और जो विजुअल्स आए जहां पे महिलाओं को नंगा किया गया, उनका रेप किया गया, सर कौन जिम्मेदार है सर इसका? और यह कोई एक ऐसा वाक्य नहीं था, ऐसे जैसे सुप्रिया सुले जी ने कहा, ऐसे लगभग 4000 एफआईआर इस तरह की रजिस्टर हुई हैं सर। सो हम सरकार के जानना चाहते हैं सरकार से कितनों पे एक्शन हुआ है, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं सर। सर, लगभग 60,000 लोग डिस्प्लेस हुए हैं, वह अपने घर में नहीं रह रहे हैं। 14,000 children are displaced sir in this. They are not able to go to schools and sir there are more than 150 deaths. So तो ये भाजपा की नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं है। So we just requested our honorable prime minister to come to the house and so that we can talk about it, so that we could just share our viewpoints with the honorable prime minister, जिससे honorable prime minister के हम सामने बात रखना चाहते थे, लेकिन honorable prime minister आज भी मौजूद नहीं है। इस चीज की हमें हमेशा कमी महसूस होगी। सर, सीएम का यह विशेष धर्म था, क्योंकि वह सीएम की कुर्सी में बैठे थे, उनका विशेष धर्म था कि वो इस वायलेंस को रोकने का काम करे। सर, इट इज अ बॉर्डरिंग स्टेट, हमारी फुल आर्मी वहां पे डिप्लॉयड रहती है, असम राइफल्स वहां पे है सर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है सर। अगर गवर्नमेंट चाहती वहां की तो विद इन 2 days सर यह कंट्रोल में लाया जा सकता था वायलेंस, लेकिन सरकार की इंटेंशन was not right और सर आज भी सरकार डिसेप्शन मोड पे ही है। सर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सेड, हमेशा उन्होंने कहा है कि वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा परिवार है सर। सो क्या मणिपुर हमारा परिवार नहीं है सर? क्या हमारे देश का अंग नहीं है सर? तो यह स्टेप मदरली ट्रीटमेंट मणिपुर को क्यों दिया जा रहा है सर? सर, बीजेपी की जो नीति है सर, वो नफरत की राजनीति करते हैं सर, वो वोट की राजनीति करते हैं सर, और बीजेपी पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार है सर। सर, आई वुड रिक्वेस्ट यू सर, internal security is at risk not only in Manipur sir, but also in Mizoram, Tripura, South Assam sir, and Haryana sir. As we see the elections are coming by, the deteriorating law and order condition and the sense of security is deteriorating among the people of this country sir. So the external security of the country and the integrity of our borders is also at the risk. So गौरव जी ने कहा कि क्या बात हुई प्रधानमंत्री के बीच में और चाइना के प्रधानमंत्री के बीच में। सो वी वांट कि जो चाइना के साथ अनरिजॉल्व्ड इशू है रिगार्डिंग द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री 2 साल से सर इस पे खुले तौर पे सदन पे बात होनी चाहिए। एंड सर, मौजूदा सरकार इन्फिल्ट्रेशन पे बात करती है कि माइग्रेंट्स आ गए हैं सर। So, but the government can always work on the infiltration by controlling the borders, sir. यह सरकार बॉर्डर से कंट्रोल क्यों नहीं कर रही है, क्यों इन्फिल्ट्रेशन होने दे रही है सर? सर, आज की तारीख में महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है आप जनता का सर, जहां समाजवादी पार्टी ने हमेशा कहा कि रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्त हो। सर, आज की डेट में सर जो मिडिल क्लास है, जो गरीब तबका है सर, सब परेशान है।
चाहे वो स्कूल की फीस हो, चाहे वो मेडिकल बिल्स हो, चाहे वो रेंट्स हो, चाहे वो हाउसिंग हो, चाहे वो लैंड प्राइसेस हो, चाहे वो पेट्रोल, डीजल और केरोसिन के दाम हो, चाहे वो बिजली हो। सर उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और साथ में देयर इज नो इंक्रीज इन प्रोडक्शन और बिजली भी मुहैया नहीं करा पा रही है यह सरकार। सर फार्मर्स, हमारे किसानों की जो स्थिति है आज के भारत में, सर farmers are having the worst time ever in the independent India. सर आप 3 कानून लेके आए, काले कानून, न जाने कितने किसानों ने अपनी जान गंवाई। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मुहैया कराएगी हमारे फार्मर्स को, which has not yet materialized, sir. सर आर्टिफिशियल स्कैसिटी क्रिएट की जाती है, लेकिन इसका जो मुनाफा होता है सर वो हमारे किसान भाइयों को नहीं मिल रहा है। तो ये किसान भाइयों को जो मुनाफा नहीं मिल रहा है, ये मुनाफा जाता कहाँ पे है सर? इतनी महंगाई हो गई है कि सर महिलाओं को बहुत दिक्कत हो रही है। वो न्यूट्रिशन के एंगल से सर कोई थाली, जैसे कि सुप्रिया सुले जी ने कहा था कि आज की डेट में एक थाली की कीमत लगभग 500 रुपए से भी ज्यादा है सर। अगर वो चाहती है कि दाल, रोटी, सब्जी, पनीर उसकी थाली में हो, तो महिला नहीं कर पा रही हैं सर। Sir, BJP is destroying the administrative and financial federalism espoused by the framers of the constitution. Sir, they are destroying the institution right from EC, ED, CBI to others. Sir, they are using them as tool to harass the people of the country, sir. And sir, the government of India की minister ने तो यहाँ खड़े थी वो, और सीधे थ्रेटन किया कि आपके घर भी ईडी भेज देंगे। सर दिस इज अ न्यू लॉ इन आवर डेमोक्रेसी। सर देयर हैज बीन रेगुलर अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। सर बेरोजगारी से युवा परेशान है आज की तारीख में। सर अग्निवीर जैसी योजनाएं जब ये सरकार लेके आती है जिसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, आप हमारे नौजवानों को वर्दी तो पहनाएंगे, लेकिन 4 साल बाद आप उनकी वर्दी उतारने का भी काम करेंगे। So as per the Rajya Sabha question reply, almost 1.2. Sir, please. You cannot ask her to stop. Sir, as per the Rajya Sabha questions reply, almost 1.26 lakh positions are vacant in Uttar Pradesh of teachers for classes 1 to 8 in the government schools. Similar situation is there in UP Police, in the hospitals, in nurses, in ITIs, in PHCs, in home guards, in universities, and much more, sir. Sir, all the government of India schemes have failed and collapsed, sir. Be it Skill India Develop, be it Skill India, Make in India, Digital India, Swachh Bharat Abhiyan. सर लखनऊ आके देखिएगा क्या स्वच्छ भारत अभियान है सर। सर बनारस को क्योटो बनाने की बात कही गई थी सर सारे झूठे वादे थे। सर BJP people indulge in the politics of divide, hate and rule. Yes. लोगों में विभाजन करके आप शासन करना चाहते हैं। Sir, the condition of the OBCs, the SCs, the STs, women and minorities is threatened every day by this government, sir. They feel as if they are the second-class citizens, sir. Sir, you gave him so much of time, sir. I would request, sir. It is proportionate time. सर, ये अनुपात में होता है। आप प्लीज प्लीज ये समय का जो आवंटन है वो अनुपात में होता है, प्लीज। Sir, the position of OBCs, SC, STs, women, minorities is threatened every day in this government. They feel as if they are the second-class citizens. Police has become a tool of harassment, sir. Sir, a family in Uttar Pradesh was burnt alive by the UP police in Kanpur Dehat, sir. Sir, I would request you, and आप रिक्वेस्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब को कि वो आए। सर बहुत ही सदन में लोग बहुत कम हैं। थैंक यू। आएंगे, ठीक है सर। आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक हियर। सर टुमारो सर जी आप कंप्लीट कीजिए। ओके सर 1942 में सर 8 अगस्त के दिन ही क्विट इंडिया मूवमेंट की स्थापना हुई थी सर।
सर आज भी 8 अगस्त है एंड सर मैं कहना चाहूंगी बीजेपी के लोगों से कि स्टॉप डिवाइडिंग आवर कंट्री, स्टॉप डिवाइडिंग इंडिया। सर एनी वर्ड्स आई वुड लाइक टू थैंक यू। श्री पिनाकी मिश्रा जी। Thank you, Honorable Chairperson, for giving me the opportunity to speak on behalf of my leader, Shri Naveen Patnaik ji, and the Biju Janata Dal on this no confidence motion that has been brought by the Congress party today. Mr. Chairman, it goes without saying that the foundation of the Biju Janata Dal is anti-Congressism. We were born on the 25th of December, 1997, on the basis of opposing the Congress party's corrupt rule in Odisha at that point of time. The late Biju Patnaik, on whose name the Biju Janata Dal is named, started his life as a congressman, but like many of us, got eventually disillusioned with the Congress party, left the Congress party and became a beacon of opposition politics, of Janta politics, and that's how the Biju Janata Dal was formed. So therefore, any motion brought by the Congress party, it goes without saying, is out of question for the Biju Janata Dal to support. So therefore, at the threshold, let me make it clear that we oppose this motion because of the fact that it's been brought by the Congress party to this house. But there are many other compelling reasons, and I will tell this house, Mr. Chairman, about why the Biju Janata Dal feels that this is a misplaced motion, totally out of place at this point in time, to be brought to this house. Mr. Naveen Patnaik is now in his 5th term as Chief Minister of Odisha consecutively. He is now the 2nd longest serving Chief Minister in the country. He has just crossed late Shri Jyoti Basu's tenure in West Bengal. He is now only behind Mr. Pawan Chamling in Sikkim. And next year in August 2024, by the grace of Lord Jagannath, when he is elected for the 6th time as Chief Minister, he will cross Mr. Pawan Chamling's tenure and become the longest serving Chief Minister ever in the history of India. And I'm very glad to say, my heart is gladdened that somebody like Shri Amit Shah ji was in Bhubaneswar on Saturday in the presence of many of our distinguished colleagues here. Aparajita Sarangi ji was there as well, I think, our Honorable Bhubaneswar MP. Shri Shah very graciously said that it is without doubt that Mr. Naveen Patnaik is India's most popular Chief Minister. These were Mr. Amit Shah's own words. And he also praised Mr. Patnaik for the cooperative federalism and the constructive cooperation with the center that he has demonstrated in his last 24 years as Chief Minister. He doesn't believe in needlessly picking quarrels with the central government. It doesn't pay. We are a regional party. In the kind of fiscal architecture our constitution has provided, it is impossible to continuously bicker and fight with the central government and survive as a model fiscal state as Odisha is today. Particularly if you are needlessly, constantly heckling the central government, because that doesn't obtain to the interests of the people of the state. This is Mr. Patnaik's firm view. He believes that, yes, party politics has its place. There is no question. And that's why I said the other day when I was speaking on the Delhi bill, the BJP is our principal opposition party in the state and we fight them tooth and nail when elections are concerned. But once elections are over, then that should be the end of party politics. Then governance kicks in. And for governance to kick in, you have to rise above partisan party politics and work in partnership with constructive cooperation in a federal structure. That's what Mr. Patnaik has always believed in, and that's what Amit Shah ji, in fact, said, that this is the reason that I appreciate Mr. Patnaik's role as Chief Minister. I cannot support a no confidence motion against a central government today, even though we are against the BJP as a political party. But a central government which may not have given us our entire wish list. No central government ever can give every state government's entire wish list. I recognize that fact. There are fiscal constraints in where resources are
in short supply, and therefore it's not possible for every central government to give into every state government demand. But in terms of rise in coal production, in terms of mineral royalty revision, which has long been Odisha's just demand, in terms of the removal of an export tax on iron ore and manganese ore, which was vital for Odisha's fiscal management. In terms of, the other day there was a bill for exploration of offshore minerals, which has long been our demand. In terms of, in my constituency, a Puri International Airport, which has again long been a dream of the people of Puri. Now that is well underway. Yesterday, Mr. Sindhya very kindly said in the House that it is virtually in the last stages of completion of plans, and therefore construction should start very soon. In terms of the Puri Heritage, Jagannath Puri Heritage Corridor, which was opposed by some of my distinguished colleagues, I shall not name them, but which the central government ensured the ASI gave permission for it. So I am grateful, therefore, for many things that the central government has done for Odisha, which is why, in any case, I am unable to persuade myself on behalf of my party and my leader to support a no confidence motion today, which has been brought by the Congress party. Let me now come to the merits of this particular no confidence motion that they have allegedly brought on one count alone, that is to bring the Prime Minister to the House. That seems to be the reason why this no confidence has been moved, that the Prime Minister should be brought to this House. He is avoiding the House and avoiding speaking on Manipur. Mr. Chairman, I have always believed that the Congress party is adept at snatching defeat from the jaws of victory. They are also very adept at cutting their nose to spite their face. And I say this advisedly. They know every time the Prime Minister has got up to speak on the floor of this House, and I think his worst political adversaries will recognize the fact that he's a peerless orator. There is no question. I don't think there is an orator today in India who matches him. There's no question. Everybody recognizes that fact. So every time he gets up on the floor of the House, he pushes the Congress party through the shredder. I mean, they actually go through a shredding machine. So I cannot understand why they should cut their nose to spite their face, ask him to come to the House and put them through the shredder, as I have no doubt he will when he replies on Thursday. So this defies common sense, it defies logic, it defies political sense. I believe that there are other arguments that would have been more persuasive. The people of this country will decide if the Prime Minister has chosen not to speak, whether that was right or that was wrong, is for the people to decide. And you have to take that case to the people. You don't bring a no confidence, which is doomed to fail in any case. At the threshold, you know your no confidence is doomed to fail. You don't bring it needlessly and waste the time of the House. You don't disrupt the House needlessly when you know that the ruling party likes nothing better than the House being disrupted so that bills can be passed in the din. So ministers are happy not to answer any questions in question hour. This is, for every ruling party, this is a dream scenario. They let the opposition disrupt parliament so that we can go home and sleep happily. So therefore, this kind of disruptive politics has not paid dividend in the past, and I have no doubt that this kind of disruptive politics will not pay dividend in the future. As far as Manipur is concerned, I have to say that the Honorable Home Minister had called an all-party meeting. I was one of the members who was present there on behalf of my party. It was an exceptionally detailed analysis which was given to everybody. The Congress party was represented there by Shri Ibobi Singh, the three-term former Chief Minister. All the other parties were there. And we were given a complete kaleidoscope, really, of what has gone wrong in Manipur. And these are legacy issues. Manipur is not the result. Today's conflagration in Manipur is not the result of the last 10 years. Let's face it. It's the result of almost 50 to 60 years of strife in Manipur. The fact of the matter is that this entire issue has boiled over, not now, it has boiled over 3 or 4 times in a major way through the 80s and the 90s. This was somehow capped until very unfortunately, the Manipur High Court in a PIL suddenly woke up one fine morning. In a 20-minute hearing without pleadings being completed, the High Court passed what, according to me, is one of the most ill-advised orders that this country has ever seen, of
giving a direction to the state government to immediately consider within 4 weeks the giving of ST status to a particular community. Firstly, this is totally without jurisdiction because the state government can't do it. It's something only the central government can do. So the High Court not only passed a totally erroneous order, but passed an order without hearing all the parties, without affidavits being completed, without any kind of rationale or logic. It simply passed an order which the Supreme Court severely deprecated. The Honorable Chief Justice's Court on 19th of May severely deprecated the High Court order. But I believe the central government missed a trick there. I believe the central government, in asking for the matter to be remanded back to the High Court to be heard there, was a huge error. And I pointed this out at the meeting, that the central government should have been happy to let the matter rest in the Supreme Court's lap. Because we have seen that the people of this country have great faith in the Supreme Court. Look at the classic case of Babri Masjid, Ram Janmabhoomi dispute. For decades, this dispute could not be resolved until the Supreme Court sat down, gave a judgment, and both parties accepted it graciously. So I believe that if this issue had been left to the Supreme Court, tempers would have cooled. Instead, the matter went back to the High Court, and the High Court, again, in a totally ill-advised order, instead of cancelling the last order, simply revised the order and said, all right, instead of 4 weeks, you take 1 year to decide this matter. Which means the sword of Damocles, therefore, kept hanging, and this is what has constantly created the kind of friction that we have seen. Mr. Chairman, I have to say that what has happened in Manipur today is, as Mr. Patnaik says, heart-rending. And he has asked me to, in fact, mention in the all-party meeting and to speak today and say that all parties must speak in one voice. What this parliament cannot afford is a no-confidence motion against the central government, because every political party must give their constructive suggestion at the moment to say what is possible, what can be done, because you are really trying to fit a square peg in a round hole there. That's the problem today. So therefore, you have to give constructive suggestions rather than blaming the central government for what is clearly a legacy issue running back several decades. There is no question that blame has to be apportioned to the state government. Every right-thinking person has said so. Every right-thinking person has said that the chief minister ought to have conducted his politics and his policies on the basis of Raj Dharma, which perhaps has been lacking there. There's no doubt about it. But I don't know whether the central government would have been better advised to have brought in president's rule, because clearly there was no alternative to this chief minister. Therefore, if the president's rule had to be imposed there, I'm not sure that in this country has ever worked satisfactorily in other states as well. So it is really a Hobson's choice, and that the central government was confronted with. And that is something that I think all political parties honestly should have considered and should have felt, therefore, that the need of the hour is to speak in one voice and not to speak in a fractious tone. And I'm going to conclude in a short while. The heart-rending scenes that we have seen with regard to the atrocities on women in Manipur is not new to us. This is seen everywhere in the world where there is strife, where there is this kind of conflict, where there is this sort of internecine warfare. We have seen this in sub-Saharan African nations, in Burundi, between the Hutus and the Tutsis. We've seen this in Rwanda, for instance. We've seen this in Bosnia-Herzegovina. We've seen this in Serbia. So this is endemic, unfortunately, to our society and our polity. And therefore, I come to this one seminal issue, that the way forward for women's empowerment is again what Mr. Naveen Patnaik has been repeatedly requesting the central government to bring in the women's reservation bill. And I think that is one area where the central government will be seriously remiss if in the 17th Lok Sabha they don't do it, because there is a full majority. In fact, there is near unanimity. Today, all shades of political opinion in this house and the upper house are of the same opinion, that there should be women's reservation in the state assemblies as well as in central parliament, because that is the kind of empowerment we need for women on the ground level, at the cutting edge level, at the grassroots level, to feel empowered,
to feel that they have an equal stake in society, and for men to therefore feel that, look, they are now our equals, they are in a as powerful position as we are, so therefore we should treat them at par. So, Mr. Chairman, this is something that I would seriously on this occasion, if there is anything on which I feel that this government, I think, lacks the confidence of this House, quite frankly, is that they have not brought, despite being fully empowered to do so, the Women's Reservation Bill so far. We have now only one more session of Parliament after this, which is the winter session. I certainly plead and urge the Prime Minister that he should bring in the Women's Reservation Bill, have it passed unanimously. It can be done in 15 minutes in the lower house and the upper house. Parliamentary Affairs Ministers here, I have requested him personally many times also. But that, they're saying that it is lapsed now. Because I know it should not. I don't know, I was told. But in any case, so that is one of the things that we need to seriously consider. Now, therefore, for a number of compelling reasons that I have mentioned, we are completely unable to persuade ourselves on behalf of the Biju Janata Dal and Mr. Naveen Patnaik to support this no confidence motion. I have no doubt that it will be resoundingly defeated and it will be rejected as it ought to. And unfortunately, I think it will not at all benefit the Congress party to have brought this no confidence at this point. Shri Arvind Sawant. Thank you very much, Mr. Chairman. थैंक यू चेयरमैन सर। एक बहुत गंभीर विषय पर अविश्वास का प्रस्ताव विपक्ष के सभी दलों ने यहां रखा। दुर्भाग्यवश जिस गंभीरता से हमारे मित्र गोगोई जी ने इस प्रस्ताव को रखा, उसके बाद में जो भाषण में सुन रहा हूं, 1953 में क्या हुआ, 76 में क्या हुआ, पैदा भी नहीं हुआ था तू, तो ये सारा जो बताने की बात चल रही है वो पूरा विषय को लेकर उसकी गंभीरता को कम करने का जो प्रयास हो रहा है उसकी मैं निर्भत्सना करता हूं। विषय क्यों आया, मेरे मित्र अभी पिनाकिन जी बोल रहे थे, तभी मैं सोच रहा था क्यों लाया अविश्वास का प्रस्ताव। भैया सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लाने की बात नहीं है, बात यह है कि जिस विषय को, मणिपुर के विषय में इतना बड़ा हिंसाचार हुआ, महिलाओं पे अत्याचार हुआ, केंद्र की सरकार 70 दिन चुप रही। अगर चुप न रहती तो विषय नहीं आता, चुप रही। आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने तमाचा लगाया, इफ यू आर यू गोइंग टू एक्ट ऑन इट, शुड आई इंटरवीन। तब जाकर मुंह खुला 36 सेकंड के लिए। ये गुस्सा है, ये बहुत दर्द है, हृदय विदीर्ण है। हम मणिपुर में जाकर आए हैं सर, और ऐसे विषय पर जब हम राजनीतिक बात करते हैं, हमारे पहले भी किसी पूर्वजों ने कहा, महाराष्ट्र की बात मैं भी करूंगा अभी, वो हमें हिंदुत्व सिखा रहे हैं। हम पैदाइशी है, ये हमें हिंदुत्व सिखा रहे। हिंदुत्व में भगोड़े नहीं होते, भगोड़े नहीं होते। जो लोग भगोड़े हैं वो भगोड़े क्या बोलेंगे, जिनके पास इतना दम होता, उनके पास इतना दम होता। मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, आप लोग किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी को नाम नहीं लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। आप बोलिए, आप भगोड़े लोग आप हिम्मत कह चुके हैं। अगर हिम्मत होती ना, प्लीज नो, अगर हिम्मत होती, जी आप बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं बोल रहा हूँ सर, जो हुआ हादसा हुआ, अगर हिम्मत थी वो क्या हिंदुत्व सिखाएंगे हमें? जिनको जो जन्म में आए यहाँ, इनको क्या मालूम है बाला साहब क्या थे? वंदनीय बाला साहब ने हिंदुत्व ये बताया, भैया मुझे मंदिर में घंटा बजाने वाला हिंदू नहीं चाहिए, आतंकवादियों को मारने वाला हिंदू चाहिए। ये विचारधारा उनकी, विचारधारा कुछ नहीं सर। आज मैं बताऊंगा सदन में सच्चाई क्या है। झूठे लोग सच बताने की कोशिश करते हैं, उस विषय पर मैं आऊंगा। और भी झूठे लोग झूठी बात करके सच्चाई बता, छुपाने की बात करते। अब रही बात जो हुआ वह हादसा, सर महाराष्ट्र की बात आई, आपने कहा अविश्वास प्रस्ताव क्यों? मैं बताता हूं अविश्वास प्रस्ताव क्यों। जिस तरह से आपने बर्ताव किया है, वो मणिपुर के बारे में हो, हिंदुत्व के बारे में हो, और अन्य आपकी राजनीतिक सामाजिक नीति जो रही
मैं आपको बता देता हूं, आज की सरकार भी जो कहते हैं ना हमने किया हिंदुत्व के लिए इनको छोड़ दिया, और जिनको छोड़ा वो तुम्हारे पास आए वापस, जिनका नाम लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नेशनल एनसीपी पार्टी क्या है, नेचुरल करप्ट पार्टी, उन्होंने भरी सभा में भरी रैली में कहा, 3 दिन बीते, उस रैली में आगे कहा 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ, सिंचाई का घोटाला हुआ, बैंकों का घोटाला हुआ। 4 दिन में जिनके नाम पर घोटाले थे सभी महाराष्ट्र की सरकार में शामिल हुए। सिर्फ शामिल नहीं हुए, मंत्री भी बने सर, उपमंत्री बने। मंत्री बने मतलब क्या है, भ्रष्टाचार के खिलाफ हो आप। ईडी के केसेस लेकर सबको डरा के लेके गए, भगोड़े लोग बोलेंगे राष्ट्रीयत्व की बात। और ये वॉशिंग मशीन जो चल रहे हैं ना सर, ये क्या बोलेंगे, उस वक्त तो उनका नाम लेके गए थे, अभी उनके साथ में बैठे। आज विषय गंभीर किस बात का है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने छुप कर बैठे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय तमाचा लगाने के बाद। अब आगे चलकर पिछले 4 दिन में क्या क्या हुआ, पिछले 4 दिन में जैसे हमारे बारे में हुआ, आज भी हमारे महाराष्ट्र में जो सरकार है वो संविधान बाह्य सरकार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय दिया, कह दिया है सभी लोग अपात्र होंगे, मुख्यमंत्री से लेकर सभी का नाम लिया, ये सभी अपात्र होने वाले हैं। फिर भी मैं तो सुप्रीम कोर्ट का दायर, बोलो सुप्रीम कोर्ट से कि मैं पार्लियामेंट में बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने दायर, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, सदस्य पे कार्रवाई करने का निर्णय दिया। अब क्या बात करेंगे, अब यही बात करता हूं आगे चलकर। सभापति चेयरमैन सर, सुप्रीम कोर्ट ने यहां भी कर दिया मणिपुर में। कल क्या निर्णय दिया पता है आपको, अगर सरकार होती ना तो शर्म आती सरकार को कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बिठाई, सुप्रीम कोर्ट ने डीआईजी पद बिठाए, सुप्रीम कोर्ट ने 3 हाईकोर्ट जजेस पीछे वाले, उनके पास कार्रवाई करने का अधिकार दिया, सुनवाई करने का अधिकार दिया, जांच करने का अधिकार दिया, पुलिस के ऊपर कार्रवाई की। सरकार कहाँ है, सुप्रीम कोर्ट चला रहा है, मणिपुर की जांच कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट तय कर रहा है। ये तो आपकी सरकार पर तमाचा है। फिर भी नहीं शर्म आती आपको, फिर भी आपको बुरी नहीं लगता, फिर भी बुरा नहीं लगता, पूरी भी बुरा नहीं लगता। अब बात हुई ना, उन्होंने जब बोला मैं एक शब्द भी उतर के बोला नहीं है, क्यों लग रही है मिर्ची, समझ लो क्यों लग रही। अब कोविड की बात आई सर, कोविड के समय में भी मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब ने जो काम किया उसकी सराहना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने की, माननीय नीति आयोग के लोगों ने की, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने की। और कहा ये जो उद्धव ठाकरे जी ने जो पैटर्न लगाया है, धारावाहिक पैटर्न, उसका अमल करो पूरे देश में। इतनी सराहना करने के बाद झूठे इल्जाम लगा, तभी तो तुम भी तो सरकार में थे, जो इल्जाम लगा रहे हैं वो भी तो सरकार में थे। कौन से अधिकार से बोलते हो, कौन से अधिकार से बोलते हो, आप लोग सरकार में शरीक थे, आप मंत्री थे, 2.5 वर्ष आप भी साथ में थे, बोलने का अधिकार बैठा है। इसलिए मैं सभापति महोदय, मैं 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दे लगता हूं। प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य, सत्यपाल मलिक जी फाड़ रहे पूरी, उन्होंने पुलवामा के बारे में क्या बोला, उन्होंने भ्रष्टाचार के बारे में क्या बोला, और 2-3 मुद्दे और भी। महाराष्ट्र को कितना आपने हैरान किया, क्यों हम विश्वास रखे। महाराष्ट्र का फाइनेंशियल सेंटर आप गुजरात में लिखी गई, महाराष्ट्र का वेदांत फॉक्सकॉन गुजरात में लिखी गई, महाराष्ट्र का एयरबस गुजरात में लिखी गई, महाराष्ट्र का ड्रग पार्क गुजरात में लिखी गई, महाराष्ट्र का पुलिस स्टेशन गुजरात में लिखी गई, महाराष्ट्र का डायमंड सेंटर गुजरात में लिखी गई। महाराष्ट्र के बंदरगाह का विकास 9 वर्ष में महाराष्ट्र का बंदरगाह का विकास नहीं हुआ। महाराष्ट्र के मिल वर्कर्स के बारे में जमीन पर कुछ करना है, कुछ नए प्रोजेक्ट, कुछ नहीं किया। उल्टा जब हमारे पास निसर्ग तख्ते का चक्रवात आया था तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां गुजरात में भी आया था, गुजरात में घूमे, उनका हेलीकॉप्टर आगे नहीं आया, पीछे गया वहां से। महाराष्ट्र के ऊपर ध्यान नहीं दिया, इतना सारा इल्जाम लगे। इसके बाद में हम बुलेट ट्रेन, हमारे यहाँ तो 10%, तो हमारे पास 70% पैसा बुलेट ट्रेन के लिए, सबकी गुजरात की सारा इस्तेमाल होना है। सभापति महोदय, महत्वपूर्ण विषय ऐसे है कि इसने जो चीजें उन्होंने की है, खास करके 1 मिनट, आपको बुरा लगना चाहिए था, किसानों का आंदोलन हुआ, 100 से ज्यादा लोग मर गए, बुरा नहीं लगा।
आखिर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा, क्षमा मांगनी पड़ी। देश की क्षमा मांगता हूं और सारे बिल वापस लेता हूं। मरे कितने लोग, कुछ है उसकी परवाह? मॉनिटाइजेशन किया, कितने लोग मरे, है कुछ अश्रु ढाया? पुलवामा के लिए अश्रु ढाया? कभी नहीं अश्रु ढाया। यही तो दुख है, यही तो दर्द है। संवेदनाहीन सरकार चला रही है। और इसलिए सभी सभापति महोदय, आज जो काम हो रहा है, या जो खास करके पब्लिक सेक्टर हमारे जो बेचे जा रहे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, अभी तो सभी ने बोला तो मैं उससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। पब्लिक सेक्टर में बीएसएनएल कहा गया, इनके ऊपर इल्जाम लगाते लगाते 2 बरस बिताए, आज 9 बरस हो गए, बीएसएनएल डूब रहा है, एमटीएनएल डूब रहा है। स्ट्रेटेजिक कंपनी है, कुछ नहीं हो रहा। कहाँ रोजगार मिला? और गद्दारों को भी बुरा लगता है गद्दार कहने के। महिलाओं पे अत्याचार, पेंशन का विषय। और सभापति महोदय, आखिर में इतना ही चाहता हूँ, क्यों हम इकट्ठे आए हैं? हम इंडिया, हमारा इंडिया कहते हो तो बुरा लगता है। आप तो खेलो इंडिया कहते हो, बेचो इंडिया कहते हो। इसलिए इतना ही आखिर में एक वाक्य कहता हूँ, नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। जी, तुम्हारा सोशल मीडिया रोजाना देखो सर। हमारे महाराष्ट्र के हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष जी गाय काटती हुई बता रहे थे लोगों, गाय कहाँ काटी? नॉर्थ ईस्ट में, बता रहे का कर्नाटक के चुनाव में। क्या चाहते हो? थैंक यू। इसलिए नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दो, हम वो परवाह नहीं है, पत्थर को भी मोम कर दो, यही हमारा इरादा है। इसलिए हम इकट्ठे आए। जय हिंद, जय जी। वो तो आपको करना पड़ेगा। जी जी जी, प्लीज। अध्यक्ष महोदय, अविश्वास के प्रस्ताव पर इस सदन में काफी मान्यवर का भाषण मैंने सुना, और उसके बाद अभी शिवसेना उद्धव ग्रुप के अरविंद सावंत जी का भाषण सुनते वक्त मुझे लगा कि मैं दिल्ली में नहीं, महाराष्ट्र में विधानसभा में बैठा हूं। तो इसलिए अरविंद, अभी आपका सुना ना, मैं अभी मेरा माननीय मंत्री जी बोलिए। जी अध्यक्ष महोदय, अविश्वास का प्रस्ताव पे उन्होंने जो उसके पहले सम्मानीय शिंदे साहब ने जो विचार रखे, उनको उत्तर देने का काम किया, और उन्होंने हिंदुत्व की भाषा की। उसका शिवसेना का, इनका गठ का, उद्धव जी गठ का, गठ ग्रुप का हिंदुत्व किस तरह का है उसका भी बारे में उन्होंने कुछ कहा। अब हिंदुत्व के बारे में इतने हो, हिंदुत्व चाहते हैं, उनको गर्व है, तो जब 19 को सत्ता पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर उस वक्त गद्दारी कर पवार साहब के साथ गए, जब हिंदुत्व याद नहीं है, नहीं आया याद? सर अभी वो एक मिनट सर, वो हिंदुत्व और असली शिवसेना के बारे में कह रहे हैं। ये शिवसेना में कब आया? मैं 1967 का शिवसैनिक हूँ, साथ में 1900। ये नहीं, अरे बैठ, पीछे बैठ। व्यक्तिगत मंत्री जी, माननीय मंत्री जी प्लीज, प्लीज, नो नो नो, माननीय मंत्री जी प्लीज ना, उनको बच्चे को प्लीज डोंट बी पर्सनल, कुछ नहीं बोला जी ना, हम लोग कोई भी नहीं कुछ बोले। वैयक्तिक टिप्पणी से बचिए प्लीज, वैयक्तिक टिप्पणी से बचिए प्लीज। सर अभी वो भारतीय जनता पार्टी माननीय, अरे पार्टी बदलने को भी ताकत लगता है, तुम लोग को छोड़ के गए ना। अरे छोड़, माननीय मंत्री जी इधर इधर, एड्रेस द चेयर ओनली, एड्रेस द चेयर ओनली। मैं पार्टी छोड़ा ना, ये 220 लोग ने प्रोटेक्शन लिया था, 220 लोगों ने, हो गया। ये क्या बात करते हैं अभी? थैंक यू। सब अभी कुछ नहीं बचे, अभी बचे नहीं है, खाली अभी जो आवाज आ रहे हैं ना, वो बिल्ली का, टाइगर का आवाज नहीं है, वो खत्म हो गए। अभी वो उनको कोई हमारे पंतप्रधान जी के ऊपर बोलने का
कोई अधिकार नहीं है, औकात नहीं है उनकी पंच प्रधान जी के ऊपर बोलने की। जी जी। अभी आपने देखो महाराष्ट्र में कहाँ तक है, कभी डूबने वाले वही देखो, मगर भारतीय जनता पार्टी और माननीय पंच प्रधान जी हमारे माननीय अमित शाह इनके ऊपर उंगली भी बताया ना। थैंक यू। तो तुम्हारी औकात में निकालूंगा क्या असलियत है, इधर में निकालूंगा। इसलिए श्री सिमरनजीत सिंह मान जी, श्री सिमरनजीत सिंह जी जी आप प्लीज प्लीज बैठ जाइए प्लीज। हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब वर्षाकालीन सत्र है, थोड़ी गड़गड़ाहट, थोड़ी बारिश, ये लग रहा है कि होना ही है। बैठिए बैठिए अभी, अरे कई बैठिए तो सही, बैठ जाइए, बैठिए आप तो बैठिए। अब 12-13 दिन तो केवल गड़गड़ाहट हुई है, अब थोड़ी बूंदाबांदी हो रही तो उसका आनंद लीजिए, कड़वाहट मत करिए प्लीज जी। Mr. Chairman, sir, this motion has not been brought about by the Congress party. This no trust motion has not been brought about by the Congress party. It has been brought about by the entire opposition. We are very, very pained with what is happening in Manipur. Christian churches have been burned and women have been paraded naked. One of the women is the wife जी व्यवस्था बनाए रखें, of a subedar व्यवस्था बनाए रखिए, who fought in the war against Pakistan, and it is shameful. The other thing is that the majoritarians in Manipur have looted an armory. Now, what does the majoritarians want by looting an armory? They have the whole armed forces, they have the whole government, they have everything. But why should the armory be looted by the majoritarians? And the other thing is that the Punjab and Haryana High Court has passed the orders in Haryana that there is ethnic cleansing of the minorities in Haryana. The Rohingyas and other Muslim houses have been demolished by bulldozers. And the High Court says, apparently without any demolition order and notices, the law and order problem is being used as a ruse to bring down buildings without following the procedure established by law. And the problem is that there is an exercise of ethnic cleansing. Now, these are very, very serious charges by the Haryana and Punjab High Court. Moreover, there have been Sikh killings all over the world. I want to remind the chair that Deep Singh Sidhu was killed in Haryana. Moosewal was killed in the Punjab. Avtar Singh Thanda has been killed in the UK. Hardeep Singh Nijjar has been killed in Canada. Paramjeet Singh Panjbad has been killed in Pakistan. Ripudaman Singh Malik has been killed in Canada. Please come to the subject only. Sir, I am telling you the pain that we are feeling. And I come from a minority. Let me say represent my people. Don't shut me out, please. And journalist Dhiram Bhagat was killed in 1988. 25 Sikhs were killed in Kabul Gurdwara
in 2020 and the NIA was ordered to investigate these killings. We do not have a report of those killings as yet. And 43 Sikhs innocents were killed in Chitti Singhpura of Kashmir in 2000. We have had no report about these killings. And 2 Russian dissidents have been killed in Ritsa recently. So my humble request is that these atrocities must end. Thank you very much. श्रीमती सुनीता दुग्गल जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, हमारी भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और उसके हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिस तरह का विश्वास उन्होंने इस सरकार में रहते हुए लोगों के अंदर पैदा किया है, ना केवल भारतवर्ष के अंदर बल्कि बाहर के देशों के अंदर भी जो विश्वास उनके अंदर व्यक्त हुआ है, उसकी एक बानगी जो पिछले वाला अविश्वास प्रस्ताव आया था 2018 में, जिसका जवाब देते हुए हमारे नेताजी ने ये कहा था कि मैं तो ये कहती हूं कि हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं वो ना केवल बहुत अच्छे विकास पुरुष हैं, ना केवल इस देश को आगे ले जाने वाले हैं, ना केवल उनकी नीति पर कोई किसी तरह का शक है, ना केवल उनकी नीयत पर किसी तरह का कोई शक है, बल्कि वो ऐसे अंतर्यामी भी हैं कि उन्होंने 2018 में ये बात कह दी थी कि ये सब इकट्ठे होकर 2023 के अंदर भी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। और आज हम वही देख रहे हैं कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव ये लोग लेकर आ रहे हैं, भानुमति का कुंबा जो ये बना हुआ है, तो मैं इसके विरोध में आज आप लोगों के समक्ष खड़ी हुई हूं। आदरणीय सभापति महोदय, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का मैं एक जो नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ आया था, उसमें जब वो अपना जवाब दे रहे थे, मैं वो देख रही थी और सुन रही थी किस तरह से भावनाओं से भरे हुए उन्होंने उस समय में अपना वक्तव्य दिया था। और 1 जून 1996 का उनका जो वक्तव्य है उसके अंदर मैं सुन रही थी सभापति महोदय कि ये विपक्ष के लोग उस समय ये बात कह रहे थे, उस समय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी, कि आप मंदिर की बात नहीं करते, आप धारा 370 की बात नहीं करते और आप और तरह की इधर उधर की बातें करते हैं। तब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय में ये बात कही थी कि हमारी जो विचारधारा है, जो 1977 के अंदर हमारी विचारधारा थी, वो आज भी है, लेकिन अभी लोकतंत्र को बचाना हमारी प्रायोरिटी है। इसलिए हम राम मंदिर पर अभी बात नहीं कर रहे, अभी हम धारा 370 पर बात नहीं कर रहे, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक दिन ऐसा आएगा। उस समय में भी सभापति महोदय सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी। उन्होंने कहा था कि लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि हम मेजॉरिटी के साथ इस सदन में होंगे और उस समय धारा 370 भी जाएगी और राम मंदिर भी बनेगा। तो आज वो समय है। अभी 6 अगस्त गई है, हमारी आदरणीय सुषमा स्वराज जी, उनकी पुण्यतिथि थी, और आप ये देखिए क्या संयोग कि जो मन में विचार लेकर वो इतने समय तक राजनीति करती रही, केवल कुछ दिन पहले ही 370 धारा हटी और उसके थोड़े से दिनों के बाद 6 अगस्त को जो है उनका देहावसान हो गया। सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो एक एक कार्यकर्ता हैं, उनके मन के अंदर देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम किस तरह से भरा हुआ है, ये उसकी एक मानगी थी। तो मैं यही कहना चाहती हूं कि ये जो विश्वास कांग्रेस पार्टी का टूटा है, ये विश्वास जल्दी से वापस बनने वाला नहीं है। ये वो पार्टी है जो 400 से 40 के ऊपर आ गई और एक हमारी पार्टी है जो 2 से 303 के ऊपर आ गई। किसी ने ये बात कही है कि विश्वास वो डाली है जो एक बार सूख जाती है तो फिर कभी हरी नहीं हो सकती। अब ये चाहे कितने ही अलायंस कर लें, चाहे ये INDIA बना लें, चाहे ये घमंडिया बना लें, ये कुछ मर्जी बना लें, लेकिन अब
किसी भी कीमत पर इनके ऊपर लोगों का विश्वास नहीं बन सकता। सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि अभी तक तो शुरुआत हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो भविष्यवाणी करते हैं वो भविष्यवाणी सत्य होती है। जो भविष्यवाणी उन्होंने की 2018 में कि 2023 में फिर से लेकर आएंगे, तो वो लेकर आए हैं। अब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भविष्यवाणी है कि हम 2024 के अंदर भी फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, उनके नेतृत्व में बनाएंगे। सभापति महोदय, अब हमारा टारगेट यूनिफॉर्म सिविल कोड है। बहुत जल्द जो है हमारी कोशिश होगी कि हम वो भी इस सदन के अंदर लेकर आए। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहती हूं कि मैं सभी को सुन रही थी, हमारी सूले जी कह रही थी कि 9 साल में क्या किया। सभापति महोदय, मैं बताना चाहती हूं कि 9 साल में हमारी सरकार ने क्या किया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, किसी समय में जो मैकाले था उसने कहा था ये बात भरे सदन के अंदर कि ये जो भारत की संस्कृति है इसको खत्म कर दो, भारत की जो सनातन परंपरा है इसको खत्म कर दो। जब तक तुम ये खत्म नहीं करोगे, जब तक तुम इनके ऊपर पश्चिमी सभ्यता को नहीं ला दोगे, तब तक तुम इनकी रीढ़ की हड्डी को नहीं तोड़ सकते। सभापति महोदय, कोई वो समय था कि जिस समय में कम से कम भी आप ये देखिए, नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर 90 लाख किताबें जो हैं उनको जलाया गया, हमारे साहित्य को जलाया गया। 90 लाख का साहित्य हमारी पुस्तकों का जलाया गया, जो 3 महीने तक सुलगता रहा। और उस सनातन परंपरा को, उस संस्कृति को खत्म करने के लिए सभापति महोदय जो परंपरा, जो अपनी एजुकेशन पॉलिसी वो लेकर आए, आज बड़ी खुशी है मुझे इस बात की कि 2020 के अंदर बहुत विचार विमर्श करके सबके साथ, जिस तरह से बाबा साहब ने उस समय में सबके साथ विचार विमर्श करके हमारे देश का संविधान बनाया था, उसी तरह से ही सबके साथ विचार विमर्श करके 2020 में जो शुरुआत हुई वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो हमारे देश के अंदर अब आई है। उसी के तहत मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये कोशिश है हमारी सरकार की कि एजुकेशन जो है उसका एक्सेस सबको होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसकी मोटो है, उसका ये ध्येय है। सभापति महोदय, एक जो छोटा बच्चा है 3 से लेकर 8 वर्ष तक उसकी बुद्धि का तीव्र गति के साथ विकास होता है, ये साइंटिफिकली भी अप्रूव हो चुका है। तो इसलिए हमारी सरकार ने ये कोशिश की है कि हम एक बाल वाटिका इस तरह से बनाएं ताकि 3 से 8 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको जादुई पिटारा के नाम से हम उन बच्चों के लिए एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करें, जिसके अंदर खेल खेल में गाना गाकर, डांस करके, पहेलियों से वो बच्चे एजुकेशन प्राप्त करें। मैं अभी थोड़े दिनों पहले एक वीडियो देख रही थी, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे माननीय प्रधानमंत्री जी के चारों तरफ लिपटे हुए थे, मोदी जी मोदी जी मोदी जी करके। मिलियंस ऑफ पीपल ने उनको उस वीडियो को देखा है। सभापति महोदय, अगर आप भी उसको देखें, इतने प्यार से वो बच्चे खेलते खेलते जो है मोदी जी से बात कर रहे थे और बिल्कुल उनको हक किए हुए थे बड़े जोर से और कह रहे थे कि मोदी जी हम आपके साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं, मोदी जी हमने आपको देखा। ये प्यार, ये विश्वास जो 3 से 8 साल तक के बच्चों के अंदर भी माननीय प्रधानमंत्री जी को लेकर है, क्या ये इनका नो कॉन्फिडेंस जो है ये उस विश्वास को डिगा पाएगा? ये भूल कर रहे हैं बहुत बड़ी। माननीय सभापति जी, मैं इसके साथ साथ कहना चाहती हूं कि उन बच्चों के अंदर चिंतन की भावना हो, उन बच्चों के अंदर तर्कशीलता हो, उन बच्चों के अंदर अनुसंधान की भावना हो। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए हमारी इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, इसकी कोशिश है कि इन बच्चों को मातृभाषा के अंदर शिक्षा ग्रहण करवाई जाए। इसलिए सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा पद्धति जो है वो हमारे भारतवर्ष की शिक्षा पद्धति है, जिसके अंदर 14.9 लाख स्कूल हैं, 95 लाख टीचर्स हैं और 26.5 करोड़ सभी वर्ग के, सभी जगह से विद्यार्थी हैं। इसके साथ साथ हमारी कोशिश है कि हम स्किल एजुकेशन जो है इसके अंदर प्रोवाइड कर सकें। सभापति महोदय,
इससे पहले जिस तरह की शिक्षा पद्धति रही, बच्चों को किसी भी तरह का कोई कौशल विकास उनके अंदर नहीं हो पाता था। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे किसी कारणवश अगर 11वीं के बाद 12वीं के बाद शिक्षा छोड़ देते हैं, तो कम से कम उनके अंदर किसी न किसी कौशल का विकास तो हो, उनकी रोजी रोटी का कोई साधन तो बने। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से अब 10+2 तक के बीच में ही जो है कोई ना कोई कौशल विकास उन बच्चों के अंदर जागृत करने की कोशिश की जा रही है। सभापति महोदय, इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगी कि मैंने मेडिकल साइंस से पढ़ाई की है, लेकिन मेरा शौक जो है, मेरा इंटरेस्ट हिस्ट्री में भी था। लेकिन पहले पद्धति ऐसी थी कि अगर आपने मेडिकल साइड ले लिया तो आप जो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स हैं वो नहीं ले सकते थे। अगर आपने नॉन मेडिकल ले लिया तो आप कॉमर्स के सब्जेक्ट नहीं ले सकते थे। इतनी अब इसके अंदर जो है खुलापन कर दिया है सरकार की तरफ से कि अगर आप मेडिकल के साथ ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि 10+2 का जो सिस्टम है उसको खत्म करके अब 10th के बाद अगर 1 साल तक बच्चे ने पढ़ाई की तो उसको जो है सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल तक बच्चे ने अगर पढ़ाई की तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, और 3 साल तक अगर बच्चे ने पढ़ाई की तो उसको डिग्री मिलेगी। उस बच्चे को कहीं पर भी ये महसूस नहीं होगा कि बीच में अगर उसको पढ़ाई छोड़नी पड़ी तो उसका पूरे साल बर्बाद हो जाते थे पहले डिग्री के लिए। तो इस तरह की एजुकेशन पॉलिसी जो है वो हमारी सरकार लेकर आई है सभापति महोदय, जो पहले कभी किसी की सोच में नहीं गया कि बच्चे जो है वो कैसे पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद उनका भविष्य क्या होगा, इसके बारे में कभी किसी ने कोई चिंता नहीं की सभापति महोदय। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूं कि SC OBC के जो टीचर्स हैं उनको भी अब मैक्सिमम अपॉइंट किया गया है कि जो दूर दराज के जो इलाके हैं, रोस्टर सिस्टम से अब उनको भी टीचर्स को वहां पर जो है लगाया गया है। और इसके साथ साथ सभापति महोदय, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी और रिसर्च को जो है इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। हमारे IIT के बच्चे, हमारे IIMs के बच्चे, और अब आप ये देखिए कि सभापति महोदय सुंदर पिचई और इस तरह से कितने हमारे जो बहुत होशियार बच्चे थे वो दूसरे देशों में जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा ब्रेन ड्रेन इस तरह से ना हो, इसलिए रिसर्च जो है वो हमारे देश के अंदर ही लाई जा रही है। R&D के अंदर बहुत ज्यादा पैसा लगाकर इस तरह की फाउंडेशन बनाई जा रही है ताकि हमारे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ताकि हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर पढ़ाई कर सकें। सभापति महोदय, हमारी IIT जो दिल्ली है उसकी ब्रांच UAE के अंदर भी खोली जा रही है। इसके साथ साथ IIT मद्रास की ब्रांच जो तंजानिया के अंदर खोली जा रही है। तो ये सब एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से सभापति महोदय कोशिश है कि हमारे एजुकेशन को और ज्यादा वृहद रूप जो है वो दिया जाए। सभापति महोदय, इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सामाजिक न्याय जो डिपार्टमेंट है उसमें SC STs के लिए जो हमारी सरकार ने किया वो आज से पहले कभी किसी ने नहीं किया। सभापति महोदय, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, उसके तहत आप ये देखिए कि हजारों हजार गांव ऐसे हैं कि जिनके ऊपर पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट करके जो ऐसे जहां पर डोमिनेटिंग थे हमारे SC और ST, उनको जो है आदर्श ग्राम योजना के तहत उनका विकास किया जा रहा है। और इसके साथ साथ सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हम विश्वास की बात करें तो आप ये देखिए कि 2004 के अंदर हमारे 38 SC और ST के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के पास थे। 2004 की बात मैं कर रही हूं, और कांग्रेस के पास केवल 29 थे। और उसी तरह से मैं अगर आगे बात करूं, 2014 के अंदर SC और ST के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के पास 66 थे और कांग्रेस के पास घटकर केवल 12 रह गए। और सभापति महोदय, 2019 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास SC और ST के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 76 बने, 76 बने, और कांग्रेस के घट के केवल 10 रह गए।